So namaskar friends, how are you all doing? I'm really sorry I was not active since a long time, but I'm back. So today we will revise the solution chapter of class 12. Okay. So am I audible? I'm checking out I'm audible or not, but is someone there? Checking out I'm audible or not, but is someone there? Let me start. Let's see what happens. Let's see what happens. So friends, we'll start today revision of class 12 chemistry solutions. Okay. So friends, we'll start today revision of सो ए भिडियो रे आमे सब विषय आमे डिटेल पढ़ानी किंतु ओवरऑल आमे टिके रिवीजन करबा स्टार्टिंग रो एंड जाय कोन कोन अछि ओके सो स्टार्ट कला पूर्व आमे के देखिए कि कोन टॉपिक्स हमर अछि ए चैप्टर सॉल्यूशंस रे ओके सो वी आर स्टार्टिंग विथ सॉल्यूशंस so hame dekhiba we will see what are the topics that are there we are going to study okay so first topic जोड़ा हमें पढ़े हो जाऊ जे सेडा होची इंट्रोडक्शन ओके इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ओके इंट्रोडक्शंस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ओके तापर सेकंड टॉपिक हम पढ़िबा सेडा होची कंसंट्रेशन टर्म्स व्हाट concentration terms okay so what is concentration terms सेडा हम आगु डिस्कस करिया तापर ए concentration terms अंडर हमें कौन पढ़िबा हमें पढ़िबा परसेंटेज w by w will study percentage weight by volume we will study percentage volume by volume okay we'll study about molarity mole fraction and normality okay number third topic we are going to study is what solubility okay so we'll study about solubility okay and under solubility we'll study two categories okay first is solubility of solids in liquids and gases in liquids okay basically in this solution chapter we will be dealing with liquid solutions okay so liquid solutions means the solvent will be liquid okay so under solubility we will study the solubility of solids in liquids and gases in liquids okay and under these gases and liquids we will study about Henry's law done then the fourth topic जोड़ा हम पढ़िया सेटा होची वेपर प्रेशर विषय पढ़िया वेपर प्रेशर ओके एंड ये जो वेपर प्रेशर अंडर हम लिक्विड सॉल्यूशन विषय पढ़िया ओके लिक्विड आउटे पढ़िया सॉलिड इन लिक्विड माने लिक्विड सॉल्यूशन आम जो सॉलिड ऐड करिया कौन चेंजेस आसीबो वेपर प्रेशर रे आ अंडर आम पढ़िया राउल्ट्स लॉ ओके जोड़ा कि बहुत इंपोर्टेंट है तापर देखिए ता कौन सब ग्राफ्स अच्छी सब एट देखिए तापर नंबर 5 टॉपिक कौन पढ़िया हमें सेटा होची आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ओके आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ओके डन ए अंडर भी गोटे टर्म पढ़िया सेटा होची एजियोट्रॉप्स ओके डन
तापर नंबर 6 टॉपिक कौन नंबर 6 टॉपिक पढ़िबा abnormal molar masses है abnormal molar masses ओके एंड लास्ट टॉपिक जोड़ा हम पढ़िया सेटा होची वांट ऑफ फैक्टर सॉरी मु गोटे टॉपिक एटी छाडुची एटी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विषय पढ़िया ओके सो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर हमें एटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट ए चैप्टर हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विषय पढ़िया ओके सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन अच्छे हमारा सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें चारटा विषय पढ़िया एटी ओके फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओके elevation in boiling point, depression in freezing point, and finally osmotic pressure. Okay, done. So this is the sixth topic: introduction, concentration terms, solubility, vapor pressure, ideal non-ideal solution, colligative properties. Then we study about abnormal molar masses. Okay, 7 topics: abnormal molar masses. abnormal molar masses माने कौन धर गोटे सॉल्यूशन को हम स्टडी करछे हला सो जेति कि मॉलिक्यूलर मास हम एक्सपेक्ट करूचे हबो ताटू आइदर अधिक हबो किमा कम हबो सेटा डिपेंड करे ऑन द सॉल्यूट सेटा हम देखिबा सो आ अंडर पढिबा कि वांट ऑफ फैक्टर ओके एडा भी एडा बहुत इंपोर्टेंट सेटा लास्ट रे पढिबा वांट ऑफ फैक्टर आई केम दी अफेक्ट करछि केम दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ओके सो फ्रेंड्स this was the topics that we are going to study okay we'll study about introduction and types of solutions about concentration terms about solubility about vapor pressure ideal and non-ideal solution colligative properties these 4 are important then abnormal molar masses under that we will study Van't Hoff factor okay so ame jodi important देखिया को जिबा एडी कौन कौन इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि एग्जाम ओरिएंटेड अच्छी सेटा होची कंसंट्रेशन टर्म्स ओके दिस हेनरीज लॉ विषय अच्छी ओके देन अबाउट दिस राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर एंड एडी न्यूमेरिकल्स एडी बहुत इंपोर्टेंट अच्छी एडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रो ओके आ तापर किछि इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वांट ऑफ फैक्टर ओके सो मागु को कंप्लीट लेक्चर्स भी प्रोवाइड करी गोटे गोटे बट ए वीडियो रे जस्ट हम ओवरऑल गोटे रिवीजन करबा आउ किछि टेस्ट क्वेश्चन भी मु टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करछि आ तार डिस्कशन हमें करबा ओके सो गोटे स्क्रीनशॉट नै जाओ सो स्क्रीनशॉट नै सैलो सो एबे हम फाइनली स्टार्ट करबा इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ओके सो मोर आप कर दोजी मुझे चेक कर दूची मो ऑडिबल अच्छी कि नहीं हाय 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 संतोष एबे 14 जन देखुचंती सो हाय एवरीवन am I ऑडिबल मो ऑडिबल और विजिबल माने बोथ विजिबल अच्छी कि नहीं टिके मेसेज कर दबो लोहान सो हमें स्टार्ट करिबा इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ओके सो मु जल्दी रब करछि काना रब करे टाइम पड़ेबो सो मु रब करे स्पीड टिके मेसेज कर दबो कमेंट रे if you can measure the speed okay so finally we are starting with introduction and types of solutions okay let's start so number 1 topic is introduction and types of solutions okay so देखिए so basically so समस्त घर को तो सब
रिलेटिव्स आसछन्ती ओके किमा किछि गेस्ट आसछन्ती ना नहीं जेतो तांको तो माने चा सर्व करो व्हेन यू सर्व द टी व्हाट डू दे से चा केते भलो होइछि ए चा रे केते चा पकेइछो केते पानी पकेइछो केते चीनी पकेइछो ना नहीं से विषय आम पढ़ा जाऊँ सॉल्यूशंस विषय ओके केते कौन पकईचे से सॉल्यूशन क्रिएट करने को सेटा आम पढ़ा जाऊँ सो व्हाट इज सॉल्यूशंस सो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ओके होमोजेनियस मिक्सचर of two or more than two components okay so more than two or more components रो जदि तैयारी है कि किसी होमोजेनियस मिक्सचर आमे करूचे ताकू को आजे सॉल्यूशंस ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मिक्सचर मिक्सचर माने होची दुई रो अधिक सब्सटेंसेस जदि आमे किसी फिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो किबा रैंडमली आमे मिक्स कर देचे ताको आमे मिक्सचर कहबो ओके मिक्सचर हमर दीटा टाइप रो अछि गोटे होची होमोजेनियस मिक्सचर गोटे होची हेटेरोजेनियस मिक्सचर ओके सो सॉल्यूशन होची होमोजेनियस मिक्सचर कैटेगरी ओके फॉर एग्जांपल एट जदि वाटर अछि ओके एडी वाटर अच्छी सो समस्त एटा करिथिबो एट धर सुगर अच्छी ओके ना नहीं सो सुगर को आमे जतो वाटर डिसॉल्व करूछु ताको फेंटिला पर मिसेला पर सो कोन हे जाउची एटी कोन हे जाउची एटी सुगर सॉल्यूशन गोटे हे जाउची माने कोन ईच सुगर मॉलिक्यूल पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हे जाउची से वाटर ओके सो एटा बे होमोजेनियस मिक्सचर हे गेलो ओके होमोजेनियस मिक्सचर माने कोन जितकी कंपोजिशन अच्छी से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती ऑल थ्रू दी मॉलिक्यूल्स है आम ओपर टी मॉलिक्यूल जब आम टेस्ट करा से भी सुगर सॉल्यूशन एठी भी जब आम टे सिफ्ट नवा सेटा भी सेम टेस्ट हम ओके सो एटी मॉलिक्यूल्स माने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती से आम तो कहले होमोजेनियस मिक्सचर किंतु हेटेरोजेनियस मिक्सचर कौन धर वाटर बकेट अच्छी से आम सैंड विभिन्न जिनस को आम जब डिसॉल्व कर समस्ते डिसॉल्व हेबे नहीं सो आम तक सेपरेट करिपरिबा सेटा जो आम सेपरेट करिपरिबा सेटा आम को हेटेरोजेनियस मिक्सचर ओके सो एबे क्लियर है कि होमोजेनियस मिक्सचर कोन आ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ओके सो सो दिस सॉल्यूशंस सो आम जो सॉल्यूशंस विषय पढ़िबा आम टू कंपोनेंट सॉल्यूशन विषय पढ़ी ओके सो गोटे कंपोनेंट होची सॉल्यूट गोटे कंपोनेंट होची सॉल्वेंट है सो सॉल्यूट कोन सॉल्यूट जोड़ा कि लेस अमाउंट रे प्रेजेंट थी ओके और सॉल्वेंट जोड़ा कि मोर अमाउंट रे प्रेजेंट थी डन एटा जे हमें कंपेयर करबा ए जो सुगर क्रिस्टल हमें जो ऐड कले ये होची सॉल्यूट ओके आ वाटर एटी एज ए सॉल्वेंट हिसाब रे काम करूची सॉल्वेंट माने जो थरे सॉल्यूट ऐड अप होची तापर हम ताको डिसॉल्व करूची ओके सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स योर solutions okay so this was our introduction to the solutions now coming on to the types of solutions so एबे हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिबा सो हमें को कैटेगरी रे सॉल्यूशन को हमें डिफाइन करि बारे कि केते प्रकार सॉल्यूशंस अछन ओके सो फर्स्ट जे हमें सॉल्वेंट विषय जे कहबा हला ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट माने होची एटा होची सॉल्वेंट ओके एठी हमें ऐड करिबा सॉल्यूट डन ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट हमर दी प्रकार अछि गोटे होची एक्वस सॉल्यूशन गोटे होची नॉन एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कोन जोडी सॉल्वेंट हमर वाटर थिबो ओके इफ सॉल्वेंट इज वाटर इट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन आ जरी other solvent except water it is called कौन नॉन aqueous solution जदि वाटर थिबो ताको हम aqueous solution कहबा वाटर को छाड़ के डिफरेंट सॉल्वेंट्स थिबो ताको हमें नॉन aqueous solution ओके त नंबर सेकंड कोन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट हला सो सॉल्यूट हमर केते मात्रा रे अछि से सॉल्यूशन ने से अनुसार हमर दी प्रकार अछि गोटे होची कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आउडे होची डाइल्यूट सॉल्यूशन ओके सो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन माने कोन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन माने कोन सॉल्यूट रा अमाउंट हमर कम अछि ओके सॉरी उल्टा कहली सॉल्यूट रा अमाउंट जदि बेसी थिबो सेडा होची कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आ जदि सॉल्वेंट रा अमाउंट बेसी थिबो सेडा होची डाइल्यूट सॉल्यूशन ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट इफ देयर आर मोर सॉल्यूट इट इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इफ देयर आर लेस सॉल्यूट इट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ओके
सो एटा गला ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट है ए नंबर थर्ड कैटेगरी होची ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट आमर केते प्रकार अछि गोटे अछि सॉलिड गोटे लिक्विड गोटे गैस है आम सॉल्वेंट जदि सॉलिड थिबो सेटा होछि सॉलिड सॉल्यूशंस सॉल्वेंट जदि लिक्विड थिबो सेटा होछि लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉल्वेंट जदि गैस थिबो सेटा होछि गैसियस सॉल्यूशन डन ओके सो दिस इज आवर सॉलिड सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन डन क्लियर तापर आर भी डिफरेंट कैटेगरीज अच्छी ओके सो एटा होची सॉल्यूट एटा होची सॉल्वेंट ओके एटा होची सॉल्यूशन ओके सो फर्स्ट टाइम जदि सॉलिड सॉल्यूशन को कहबा सो सॉलिड सॉल्यूशन कोन आमे चले सॉलिड को सॉलिड रे मिसै परिबा लिक्विड को सॉलिड रे मिसै परिबा गैस को सॉलिड रे मिसै परिबा ओके किंतु ए तीनटा को आमे कोन पढिबा आमे टर्म करिबा सॉलिड सॉल्यूशंस ओके डन तापर जदि आम लिक्विड जदि आम सॉल्वेंट अछि आम जदि सॉलिड मिसौचे लिक्विड रे लिक्विड मिसौचे गैस रे लिक्विड मिसौचे सेम आम फिजिकल स्टेट का को बेस करके डिफाइन करू सॉल्वेंट को बेस करके सो तीनटा को लिक्विड अछि माने ए तीनटा को आम कोन कहबा लिक्विड सॉल्यूशंस ओके सो सॉलिड इन लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड इज टर्म्ड एज लिक्विड सॉल्यूशंस आ गोटे रहला कोन जदि आम सॉल्वेंट जदि गैसियस थिबो ओके सो आम सॉलिड को गैस से डिसॉल्व करि परिबा लिक्विड को गैस से डिसॉल्व करि परिबा गैस को गैस से डिसॉल्व करि परिबा सो आकु कहबा गैसियस सॉल्यूशंस ओके आल तार एग्जांपल हम इनसाइड बारे मेंशन अछि ओके फॉर एग्जांपल हम जदि सॉलिड को सॉलिड सॉल्यूशन कहबा आलोय पड़थिबा में आलोय कोन आलोय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल माने मोर देन वन मेटल जतले मिक्स थिबे किछि फिक्स्ड कंपोजिशन ने ताको हमें आलोय कोन सो एटा गला सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन एग्जांपल तापर लिक्विड इन सॉलिड कोन होबो आम जदि क्लोरोफॉर्म को जदि आम सॉलिड रे मिसौचे सेडा हबा आम लिक्विड इन सॉलिड तापर गैस इन सॉलिड कोन आम ऑर्गेनिक रे पढ़छु जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थाए कोन थाए हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल जो आम लिखु एडा हो एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड सिक्वेंस ओके तापर जदि हम लिक्विड सॉल्यूशन देखिया एबे साइंस से पढ़ले हम जदि सुगर मॉलिक्यूल को जदि वाटर रे डिसॉल्व करिया सेडा हो हम लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड को लिक्विड रे डिसॉल्व करिया फॉर एग्जांपल इथेनॉल को वाटर रे डिसॉल्व करिया तापर गैस को लिक्विड रे डिसॉल्व करिया ए जे वाटर रे हमर ऑक्सीजन डिसॉल्व हे कि थाए सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड ओके एडी होची गैसियस सॉल्यूशन सो गैसियस भी तीनटा कैटेगरी अछि एडी गैस इन गैस कोन हो आम एनवायरनमेंट रे एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस सब अछंदी सो सेरा गैस इन गैस सॉल्यूशन हम कहि परिबा एडी लिक्विड इन गैस कोन हो फॉर एग्जांपल आम जदि मर्क्यूरी को आम जदि सोडियम रे डिसॉल्व करिवा सेडा हमर हो लिक्विड इन गैस ओके कारण मर्क्यूरी अमालगमटा लिक्विड स्टेट रे थाए ओके तापर सॉलिड इन गैस कोन आम समझते कैम्फर यूज करथबा मन पकाओ कैम्फर सो कैम्फर इज ए एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ओके सो एबे हम सेकंड टॉपिक को जिबा सेडा होची कंसंट्रेशन टर्म्स ओके मु जानने वीडियो केते लंबा हो बट लेट्स सी केते बंद लाइव में जाई पारु छे ओके सो आउ थरे समरी दे दो छे हम कोन पढले सो एडी हम इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन में पढले कि सॉल्यूशन होची गोटे होमोजेनियस मिक्सचर जो थरे कि टू और मोर कंपोनेंट्स थांती ओके होमोजेनियस माने होची से सॉल्यूशन जो कंपोजिशन अछि सेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हिच ओके तापर सो सॉल्यूशंस रे कोन कोन अछि सो सॉल्यूशन देटा पार्ट अछि गोटे होची सॉल्यूट गोटे होची सॉल्वेंट सॉल्यूट कम अमाउंट रे थाए सॉल्वेंट बेसी अमाउंट रे थाए आमे सॉल्यूट को नै कि सॉल्वेंट रे में डिसॉल्व करंती गोटे सॉल्यूशन पांती ओके तापर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिबा सो आमे जदि टाइप ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करिबा सेटा तीनटा कैटेगरी आमे डिफाइन करिया नंबर 1 होची ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट हैला जदि गोटे सॉल्यूशन ने सॉल्यूट अमाउंट कम थिबो सेडा होची डाइल्यूट सॉल्यूशन आ जदि सॉल्यूट अमाउंट अधिक थिबो सेडा होची कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ओके नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट जदि सॉल्वेंट जदि
आम वाटर नहीं सेटा aqueous solution अदर देन वाटर जदि आउ किसी सॉल्वेंट अच्छे सेटा होची नॉन aqueous solution ओके तापर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट माने कोन आइदर सॉलिड रे कि लिक्विड रे कि गैस रे सो जदि सॉल्वेंट जदि सॉलिड रे थाए सेटा होची सॉलिड सॉल्यूशन जदि आमे सॉल्वेंट नोचु लिक्विड सेटा होची लिक्विड सॉल्यूशन आ जदि सॉल्वेंट नोचु गैस सेटा होची गैस सॉल्यूशन ओके बट से सॉल्वेंट रे आमे बाकी दरे फिजिकल स्टेट भी मिसे परे फॉर एग्जांपल आमे जदि सॉलिड रे सॉलिड मिसेबा लिक्विड रे सॉलिड मिसेबा गैस रे सॉलिड मिसे ओके सो ए सब नै कि सेटा इनसाइड रे एग्जांपल्स अछि मु जेडा तुमको कहि देली ओके सो एबे हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करे के जाउ छी सेटा होची कंसंट्रेशन टर्म्स ओके सो लेट्स स्टार्ट hello so we are starting class 12th chemistry and the chapter name is solutions okay so this is the most important thing that we are going to study okay so number second is what we are going to study concentration terms okay so what do you mean by concentration term okay so now what you have studied if this is your solvent okay and if this is solute okay so the solute is added to the solvent and after that what will happen a solution will be formed okay so what is concentration means that what is the amount of solute that you have added in the solvent which forms a solution that is called your concentration okay so we can define this concentration on the basis of 8 terms okay so we are going to start them one by one so number one term is percentage weight upon weight okay so what is percentage weight upon weight and remember whenever you are writing in this form this one is your solid up is your solute and the down part is your solvent done so what is percentage weight by weight we are measuring the mass of the solute with the mass of the solution okay so this is the solution so how can you define it amount of solute in grams okay present in 100 gram of solution easy or not for example if it is mentioned 5% W by W of glucose in water so what does this mean it means that 5 gram of glucose is dissolved in 100 gram of water solution okay 5 gram glucose is dissolved in 100 gram aqueous solution of water okay 100 gram solution okay so what is the concentration of water here if 5 so out of 100 gram if 5 gram is your solute and total solution is 100 gram then the remaining is your is the concentration of water that is 100 minus 5 that is equal to 95 gram done so we'll measure it like this so another expression to write is this percentage weight by weight equal to mass of the solute upon mass of the solution into 100 done now we'll come to second term that is percentage volume upon volume okay so what is the difference between this here we measured as mass okay this is W means mass so mass of solute but here we'll
measure volume of solute. Okay, volume of solute in ml. Okay, present in 100 ml solution. Okay, so how can you write it? Volume of solute divided by volume of solution into 100. Done. For example, it is mentioned 15% V by V of ethanol in water. Okay, ethanol in water. So how we will read this? We will read this as 15 ml of ethanol is dissolved in 100 ml of water solution. Okay, here is 15 ml divided by this 100 ml water, means solution, into 100. Okay, done. And what is the concentration of water then? Solvent. So total is 100 minus the solute added is 15. So how much it comes? 85 ml is water, that is solvent. Okay. So this is percentage W by W माने कौन केते मास ऑफ सॉल्यूट हमें डिसॉल्व करछे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ने W माने मास को डिनोट करे परसेंटेज V by V माने कौन सॉल्यूट रो जो अमाउंट आम सेरा वॉल्यूम फॉर्म रे ml फॉर्म रे नोचु इन 100 ml सॉल्यूशन यदि मेंशन करछे 15% V by V ऑफ इथेनॉल इन वाटर त माने कौन हबो ना 15 ml ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व हिची 100 ml सॉल्यूशन ने सो खाली यदि सॉल्वेंट रो वॉल्यूम केम जानियो ना 100 minus 15 मिलियला सॉल्वेंट रो. ओके, नंबर थर्ड परसेंटेज W by V. सो W by V कौन मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ओके, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. मास टा में ग्राम रे नोच. ओके, डन. सो ए तीनटा गला एबे हमर मेन जिंस स्टार्ट होची. सो एटा गोटे स्क्रीनशॉट नै जाओ. एबे हम इंपोर्टेंट टर्म स्टार्ट करे जाउची. सेटा होची मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन. से सब हमें डिस्कस करिया जोड़ा कि मोस्ट इंपोर्टेंट. एटा जस्ट बेसिक थिला. सो एबे हमें स्टार्ट करबो जाउची मोलारिटी. ओके, सो व्हाट डू मीन बाय मोलारिटी ना मोलारिटी होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. हला सो एबे बिट 4 रे स्टार्ट करिया व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट. सेटा होची molarity denoted by capital M. Okay, so what is molarity? Number of moles of solute, okay, present in 1 liter of solution. Okay, 1 liter of solution. Done. आम 11th क्लास से पढ़े मोल्स केमती भाग करिया भाई. मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान कौन मोल्स रो फॉर्मूला कौन ना मोल्स इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. ओके, सो मोलारिटी मान कौन आम एक्सप्रेस केमती करबा केते मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ओके, डन. सो द फॉर्मूला में केमती लिखिया कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. ओके, सो एबे मोल्स रो फॉर्मूला टा हम रिप्लेस करबा. सो कौन हबो M equal to weight
गिवन वेट डिवाइडेड बाय गिवन वेट कार माने सॉल्यूट रो एडा मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर ना नहीं आमे जदी ml ले कन्वर्ट करियो चाहिबा सो कोन हो आमे जानछु 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml ना नहीं सो 1 ml केते हो 1000 एपड़ आसीबो 1 बाय 1000 लीटर सो 1 बाय 1000 गले ऊपर को पळेबो सो मोलारिटी इक्वल टू गिवन वेट into 1000 divided by molecular weight into volume in ml. Done. So this is the final formula for molarity. Very easy or not? And this term is dependent on temperature. Okay. Why? Because this term is there, volume term is there. As you know, temperature and volume are very much related. Okay. So this was about molarity. So now we'll study a term which is we'll study molality. Okay. No, let's not study molality. आउ गोटे टर्म अच्छी जोटा कि आस सहित मैच हो सेटा होची नॉर्मालिटी. ओके सर एनसीईआरटी रे देनी बट आमे पढिबा सेटा होची नॉर्मालिटी. ओके डिनोटेड बाय कैपिटल एन. ओके ये जा एस है जस्ट टिके डिफरेंस अच्छी मु लिखुची सेपटे कौन थिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थिला एपटे कौन अच्छी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आउ थरे कहूची नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट. वेरी इजी अच्छी मु लिखला पर जानियो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट. बाकी सब सेम अच्छे प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. डन. आर फॉर्मूला केम लिखिया कैपिटल एन इक्वल टू एंड ग्राम इक्विवेलेंट को मु स्मॉल जी लिखु छला मु एक्सप्लेन करछि कि डरियार नहीं. सो व्हाट डू मीन बाय दिस ग्राम इक्विवेलेंट. ओके सेपड़े हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखथिले मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय कोन गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. इट ग्राम इक्विवेलेंट कोन गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट है. डन. डिफरेंस कोन ले एडा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किंतु ग्राम इक्विवेलेंट इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. ओके इक्विवेलेंट वेट कोन ना इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर. ओके एबे हम रिप्लेस करबा सो एडी जी जायर कोन अछि गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट जोटा ई डब्ल्यू. सो गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर. ओके तापर इक्विवेलेंट वेट रो फार्मूला पुनी पुट करिया एडी. So n equal to given weight divided by equivalent weight कौन molecular weight by n factor. एट molecular weight रहले n factor ऊपर पड़ेबो n factor एट तळे रहला molecular weight into volume in liter. Done. Very easy. तापर आमे जे लीटर को पुनी ml कन्वर्ट करिया सो पुनी ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करिया डन. सो दिस इज द फॉर्मूला किंतु आमे गोटे जिनस एठी छाडिले n फैक्टर केमती भाग करिवा ना नहीं आमे आई होप ऑडिबल अच्छी. सो एपट बाटा मोर ऑफ कर दोची
सो फ्रेंड्स लेक्चरटा बहुत ही लंबा होची सो मते लागुनी मोटा माने जल्दी बट ए टॉपिक पर मैं ट्राई करी माने जल्दी रैप अप करियो कारण ये पूरा डिटेल लेक्चर होले हे जाउची सो व्हाट इज एन फैक्टर ओके आमे केमिस्ट्री कौन टर्म्स सो माने माने कौन केमिकल कंपाउंड आमे पढ़िचे एसिड पढ़िचे बेस पढ़िचे सॉल्ट पढ़िचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़िचे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़िचे ए सब विषय आम कैलकुलेशन आम सब देखिबा ना सो एन फैक्टर होची डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स पे डिफरेंट वे थाए एन फैक्टर को भाग करबा पे ओके एसिड रो काम कोन आम जानछु एसिड जेतले सॉल्यूशन थाए से कोन रिलीज करे H+ आयन रिलीज करे बेस कोन करे OH- आयन रिलीज करे सॉल्ट आम जानछु सॉल्ट केमती पॉजिटिव आ ए जेम NaCl हला NaCl कोन रिलीज करिवो Na+Cl- सोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोन रिड्यूसिंग एजेंट कोन ऑक्सीडेशन मान लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान कोन जे अन्य को ऑक्सीडाइज करिवो बट निजे निजर रिडक्शन करिवो सेडा होची ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कोन जे अन्य को रिड्यूस करिवो आ निजे सेल्फ ऑक्सीडाइज हो सेडा होची रिड्यूसिंग एजेंट ओके फॉर एग्जांपल मु जदी सोडियम कथा कहूची सोडियम कोन ऑक्टेट हो पे कोन गोटे इलेक्ट्रॉन से लॉस करिवो Na+ हे गेला से गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कर देला ओके से निजर इलेक्ट्रॉन लॉस कला एटा कोन हला ऑक्सीडेशन हला ना नहीं एटी 0 रु प्लस हला गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कला तापर फॉर एग्जांपल Cl नै सो क्लोरीन ऑफ केटा इलेक्ट्रॉन अछि 287 अछि सो एटी गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार ताको ऑक्टेट करिया पई सो ये कोन हो माइनस हे जिवो एटी लेफ्ट साइड रे +1 इलेक्ट्रॉन हो कोन पे ना कारण ताको गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार Cl- को कन्वर्ट हवा पे ओके सो मु जस्ट गोटे कहि दोछि ऑक्सीडेशन आ रिडक्शन विथ डिफरेंस जस्ट मन पके दोछि सो ऑक्सीडेशन मान कोन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके और रिडक्शन मान कोन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके सेकंड ऑक्सीडेशन कोन होछि एडी चार्ज बढ़ुछि प्लस साइड किंतु एडी नेगेटिव साइड रे बढ़ुछि चार्ज ओके मु जस्ट आरो मार देख लिख जोछि 0 टू पॉजिटिव माने पॉजिटिव आडू को जाउछि एडा होछि नेगेटिव आडू को जाउछि ओके नंबर थर्ड पॉइंट कोन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हम जानछु और रिडक्शन कैसे कोन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन डन सो एट जदी सोडियम जदी इलेक्ट्रॉन लूज करके निजर ऑक्सीडेशन होछि से अन्य कोन करियो निजर ऑक्सीडेशन होछि माने अन्य को रिड्यूस करियो सो योटे रिड्यूसिंग एजेंट हे गेला सो से केतरा इलेक्ट्रॉन लॉस करछि किमा केतरा इलेक्ट्रॉन गेन हेछि सेडा होछि तार एन फैक्टर फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट डन सो खाली फॉर एग्जांपल जदी एसिड देछि जदी H2SO4 ओके सो H2SO4 जदि डिसॉल्व करियो से केतरा H+ दबो दीटा H+ दबो सो एन फैक्टर इक्वल टू 2 आमे क्वेश्चन अछि आगो क्वेश्चन अछि हम देखियो फॉर एग्जांपल बेस पई फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अछि CaOH ये जतले पानी रे डिसोसिएट करिवो से केटा OH- दीटा दबो सो द एन फैक्टर होछि 2 आ सॉल्ट फॉर एग्जांपल NaCl Na+ अछि Cl- सो केटा प्लस दोजि गोटे सो द एन फैक्टर होछि गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे एन फैक्टर केम डिटरमाइन करा जाय ना केतरा इलेक्ट्रॉन लॉस हेछि किबा केतरा इलेक्ट्रॉन गेन हेछि सेडा होछि तार एन फैक्टर ओके सो एडी नॉर्मलिटी सहिला आमे जल्दी रैप अप करबा कंसंट्रेशन टर्म्स को सो मु लिबोछि जदी स्क्रीनशॉट न नै जाओ ए सॉरी डाली दे दिली एक्चुअली बहुत ही टॉपिक बहुत ही स्लो चलछि कारण डिटेल जीवा पड़छि बट मैं ट्राई करबी जल्दी रैप अप करियो कारण ऑलरेडी डिटेल लेक्चर आगो को सब गोटे गोटे मु अपलोड करबी एडा मु रिवीजन वीडियो कहिछि बट डिटेल जीवा पड़छि सो बे किए किए देखु जा
सो ए 3 जन लाइव अछंती सो हमर को नंबर पॉइंट गला हमर 5 नंबर पॉइंट गला ओके एबे हमें 6 नंबर पॉइंट को देखिबा सो नंबर 6 पॉइंट होजी आमे कोन कोन पढलु परसेंटेज डबल बाय डब्ल्यू पढलु परसेंटेज v बाय v पढलु तापर परसेंटेज डबल बाय v पढलु तापर मोलारिटी पढलु नंबर 5 रे हमें नॉर्मलिटी जाके पढिछे एबे पढी हमें मोलालिटी ओके सो दिस इज आल्सो ए रिलेटेड टर्म molality which is denoted by small m okay so what is molality so molarity और molality के भीतर डिफरेंस कौन ना molality होची small m equal to n upon w in kg okay तब डिफाइन करिवा number of moles of solute okay present in आमे प्रत्येक कॉन्सेंट्रेशन टर्म रे कोन करछि सॉल्यूट रो अमाउंट केते केते डिसॉल्व हिके अछि सॉल्वेंट सेटा आमे डिटरमाइन करछि सेटा कहउछि आमे कॉन्सेंट्रेशन टर्म ओके सो मोलालिटी कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ओके सो मोलारिटी आमे कोन करथले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सो सॉल्वेंट को आमे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मेजर करथले ओके बट in terms of molality solvent को हमें in terms of mass को measure करछे so 1 kg solvent रे केते moles of solute अछि done very easy okay so similarly एडी फार्मूला को आउथर लिखो so molality equal to small n divided by capital W in kg okay so mole केंति भाग करंती solute रो given weight divided by molecular weight so एडी पुट करो so small m equal to given weight divided by molecular weight into कोन अछि ए कैपिटल डब्ल्यू होची सॉल्वेंट रो हला सब मन रखिया तळटा सॉल्वेंट ऊपरटा सॉल्यूट थाए तापर आ कोन करि परिबा आ किछ न जस्ट आमे जानछु 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम ओके सो 1 ग्राम कते होबो 1 बाय 1000 kg ओके सो 8 kg अछि आमे जदि ग्राम रे रिप्लेस करे 8 होबो 1 बाय 1000 1000 ऊपर पळेबो सो m इक्वल टू गिवन वेट इनटू 1000 अपॉन molecular weight into weight in kg done so this is about molality okay then we are going to study so author देखि दियो एबे की अच्छा is लोहान there or is सौम्य there मतलब जो सौम्य के लोहान भीतर जाने की अच्छा ठीक कमेंट लिखि दियो मजे एमते जोश मिलियो ना आउ की अच्छा ओके आम कंप्लीट करिए जल्दी okay so number 7 point is mole fraction okay आ गोटे अछि आप जस्ट तापर सर जो so mole fraction is denoted by x okay done so what is mole fraction for example एटा solution अछि okay this is a solution done एबे हम कोन करछे एट धर दुईटा सॉल्यूट अछि ओके बेसी थाय परंती माने म कहूची धर दुईटा सॉल्यूट अछि हला धर मोल फ्रैक्शन ऑफ फास्ट सॉल्यूट हमें केमति भाग करिवा ना से फास्ट सॉल्यूट रो केते मोल n1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल सो टोटल माने टोटल सॉल्यूट केते अछि दुईटा अछि सो टोटल हला n1 प्लस टू तापर x2 केते हो x2 माने सेकंड रो मोल फ्रैक्शन केते हो सिमिलरली सेकंड रो मोल केते अछि n2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल n1 प्लस n2 ओवर तब आउट आंसर मन रखिया एडी टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ फार्मूला x1 x2 सबले इक्वल टू 1 थाए ओके सो जदि x1 देछि x2 भाग करबरे 1 माइनस दैट डन सो एटा बहुत ही इजी टर्म आ एटा हमर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रे बहुत यूज हेछि आ जो प्रेशर जो थाए माने केमदि प्रेशर मोल फ्रैक्शन केमदि रिलेटेड अछि सेटा हमें आगो पड़े ओके सो दिस इज अ मोल फ्रैक्शन
सो मु रब करछि स्क्रीनशॉट नौ जे दिनियो आ गोटे टर्म अछि सेटा होछि पीपीएम सेटा होछि पार्ट्स पर मिलियन सेटा लास्ट टर्म okay so the last term we are going to study is about ppm ppm माने कोन ppm जेते सॉल्यूट अमाउंट बहुत ही कम थिवो सेटा होछि पार्ट्स पर मिलियन ओके माने बहुत ही कम थिवो सो केमति हमें मेजर करे सो ppm रो केमति फार्मूला इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट माने सॉल्यूट रो केते छोटो पार्ट अछि डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन total part of the solution into 10 to the power 6 एटा ऐड इज मानको पार्ट्स पर मिलियन माने 10 to the power 6 एटा ऐड इज ओके फॉर एग्जांपल हम टूथपेस्ट रे फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन बहुत मैटर करे मानको हमें समस्त जानि छु जेति हम टूथपेस्ट फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन टिके भी अधिक रहबो ताले हम से हम दांत को नष्ट कर देबो ओके सो द डेफिनेट कंसंट्रेशन थाए फ्लोराइड आयन रो ओके सो सेटा मेजर होवे इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ओके से एनसीईआरटी लिखा है अराउंड 1.5 पीपीएम ना कोन पंत रही परिवो जदि एक्सीड कला ताले से कैविटीज है कि से मो टूथ को डिस्ट्रॉय कर दो ओके सो दिस इज अबाउट पार्ट्स पर मिलियन ओके सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द कंसंट्रेशन टर्म्स ओके सो कोन आठटा मु जस्ट आउथर लिखि दोची तापर हमें एटा एंड करबा कंसंट्रेशन टर्म्स को This is the parts of the solute, small part divide total part solution into 10 to the power 6. Okay, so हमें कौन पढ़ले so concentration term माने केते amount of solute एड मिसी जे solvent रे जेमि solution है जे सेटा होची concentration term को हम एक्सप्रेस करि पारे ओके so what is concentration terms the amount of solute which is dissolved in a solvent to produce that solution is called as the concentration terms. It is used to express the amount of solute which is present in the solution. So कौन पढ़थिले हमें फर्स्ट पढ़थिले परसेंटेज W by W सेकंड पढ़थिले परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नंबर थर्ड रे पढ़थिले परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम ओके तब नंबर फोर्थ रे पढ़थिले मोलारिटी नंबर 5 रे पढ़थिले कोन नॉर्मलिटी नंबर 6 रे कोन पढ़थिले मोलालिटी नंबर 7 रे कम पड़थिले मोल फ्रैक्शन नंबर 8 रे पड़थिले पीपी ओके डन सो एतिके हमें पढ़िथिले सो आकु जतले रिवीजन करबे ता फार्मूला को साइड बाय साइड लिखि दबो ओके म आउथ रैप अप कर दोची सो परसेंट वेट बाय वेट माने मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 ओके एटा होची वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 ओके मास ऑफ द सॉल्यूट divided by volume of the solution into 100 तो molarity formula कोन number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution normality कोन number of gram equivalent solute dissolved in 1 liter of solution okay molality कोन number of moles of solute present in 1 kg of solvent okay तार मोल फ्रैक्शन कोन फॉर एग्जांपल गोटे ए कंपोनेंट बाय मोल फ्रैक्शन बा करछु सो से कंपोनेंट रो मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल केते प्रेजेंट थिबो तापर पीपीएम कोन एटा होची जेति पार्ट प्रेजेंट अछि डिवाइडेड टोटल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 ओके सो एटा हमरा एडी सेकंड टॉपिक सरछु सेटा होची कंसंट्रेशन टर्म्स ओके So second topic सैला concentration terms. So first topic थिला हमर introduction and types of solutions. और second topic थिला concentration terms. Okay. So एबे solubility पढ़िबा. So हमें पढ़िबा ना एडी एंड करबा नेक्स्ट लेक्चर में देखिबा. एडी जणे ही देखुची. सो टिके कमेंट करिवो. एटा कंटिन्यू करिबा ना एंड करिया वीडियोटा. नेक्स्ट वीडियो करिया. कोन कहउछ?
टिके कमेंट कर दियो, कमेंट कर दियो। लोहान की सौम्य की आउ किए देखुच? एपर्यंत किसी हेल्पफुल है कि नहीं भी टिके मेसेज कर ताकि मुझे जानिबी कि आम ठीक चलचु ना आउ किसी मॉडिफाई करवा। मेसेज करो वेट करची। हेलो सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखुचे किए किसी मेसेज करना जल्दी टे मेसेज कर दियो। नंबर थर्ड टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। ओके ओके सेम this is solvent. Okay, solute is added to the solvent. Okay, so this forms a solution. Okay, ओके सो देखिए सो सॉल्युबिलिटी माने कौन? ओके सॉल्युबिलिटी माने कौन? ए जो सॉल्यूटर केते अमाउंट एट डिसॉल्व हे पारियो सेटा हो सॉल्युबिलिटी। ओके सो सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ओके क्लियर? मैक्सिमम amount of solute which can be dissolved in a specified solvent माने गोटे specific solvent रे केते in a specific solvent at specific conditions है at specific condition कि मैं inside रे जदि मेंशन होची at specific temperature। ओके सो एड आउजी सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन। ओके नेक्स्ट कौन देखिबा? सो हम दीटा विषय पढ़िबा। सो फर्स्ट विषय कौन? ए सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ओके सो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स माने कौन? ए जेम एडी एडी हमें करिचे एडी सॉल्यूट होची सॉलिड सॉल्वेंट होची लिक्विड। ओके तब कहे सॉलिड लिक्विड ए जे हमें पढ़ले ग्लूकोज सॉल्यूशन जेमती ग्लूकोज इन वाटर ना नहीं एडा सॉलिड। सो को फैक्टर पे डिपेंड करे आम देखिए। सो फास्ट कथा आम आगु पढ़चे कौन? लाइक डिजॉल्व्स लाइक ना नहीं लाइक डिजॉल्व्स लाइक माने कौन ना पोलर सॉल्यूट माने कोडी डिसॉल्व हेबे ऑब्वियसली पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व हेबे। ए जेंती ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जतिको से माने कौन? ऑर्गेनिक सॉल्यूट जतिको से माने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व हेबे आउ नॉन पोलर सॉल्यूट्स को डिसॉल्व हेबे नॉन पोलर सॉल्वेंट रे। डन फॉर एग्जांपल पोलर का फॉर एग्जांपल मुझे तो कहली HCl इन वाटर HCl इन वाटर कौन? H+Cl माइनस एडी ऑक्सीजन ऊपर माइनस अच्छी आउ हाइड्रोजन ऊपर प्लस अच्छी। सो तांको देर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लागिवो जोटा कि कोन करिवो तांको मिली दबो। ओके सो ये गोटे कंसीडर होची पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट माने स्पेसिफिक डिफरेंट कंडीशंस सब अछि। ओके तापर सो सॉलिड इन
इन लिक्विड दीटा फैक्टर आम देखा सो गोटे हूँ टेम्परेचर आउट हूँ प्रेशर है ओके सो टेम्परेचर कौन फॉर एग्जांपल सो टेम्परेचर ये दीटा कैटेगरी अच्छी है फॉर एग्जांपल आम जो सॉल्यूट को जो आम सॉल्वेंट ऐड करछु सो व्हेनेवर वी आर एडिंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड माने मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन से रिएक्शन ना कौन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक मान डेल एच होची पॉजिटिव माने आमको हीट प्रोवाइड करिया को पड़ुची सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होची जो सॉल्यूशन होची एटा भी इक्विलिब्रियम रे होची सो आमको एनर्जी प्रोवाइड करिया को पड़ुची सो ऑलरेडी एनर्जी प्रोवाइड करिया को पड़ुची है सो सो जेते टेम्परेचर बढ़ियो माने कोन हो सेति सॉल्युबिलिटी बढ़ियो जेते टेम्परेचर बढ़ियो सॉल्युबिलिटी बढ़ियो ना नहीं कारण टेम्परेचर दरकार सो 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 जेते टेम्परेचर दरकार तो जेते टेम्परेचर बढ़ियो सेति सॉल्युबिलिटी इनक्रीज हो तापर होची एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोन जो डेल एच इक्वल टू नेगेटिव माने कोन जेते सॉल्यूट को आमे सॉल्वेंट रे मिसो छे हीट हमर रिलीज होची ओके सो ऑलरेडी हीट रिलीज होची आउट जदी टेम्परेचर दोची ताल कोन किछ लाभ नै से रिएक्शन टा पुणी फेरी आसीयो पछकु ना नै सो कोन हो एट जदी आमे टेम्परेचर बढ़ेबा ताने सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो डन सो एटा होची कंसीडर प्रेशर किसी अफेक्ट पड़े ना कारण आम जानचु सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल से प्रेशर किसी इफेक्ट से पड़े ना लिक्विड एंड सॉलिड ऊपर ओके सो एटा होची सॉलिड एंड लिक्विड रो पार्ट ओके एटा जदी एंडोथर्मिक मान कोन हमको हीट दबा को पड़छ से रिएक्शन को कैरी आउट करिया बे सो ऑब्वियसली जदी टेम्परेचर बढ़े त सॉल्युबिलिटी बढ़ी जियो बट इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन heat is released okay so heat is already being released so if we are providing more temperature again so the reaction will go back in the backward direction okay so if you increase the temperature solubility will decrease और pressure कथा जदि पड़िया ताले pressure has no effect on solubility of solids in liquids okay सो मोर आप करछि मत लगुच लेक्चर को किसी समय स्टॉप करा पड़ो कारण सब जिनस माने एते डीपली गले आम कवर हेनी एटा रिविजन वीडियोटा थिला ए पार्ट आम सारिया तापर होची गैस इन लिक्विड्स ओके सो किए किसी मेसेज कलेनी मु कंटिन्यू करछि सो टिके गोटे मिनट मु टिके इंक को टिके दे दिए ग्लूकोज टिके सो मु इंक को टिके ग्लूकोज दे दोची अरे कि अच्छा टिके रिप्लाई करो कमेंट रे एक्चुअली बहुत दिन आनी माने वीडियो अपलोड करियो नथला सो माने बहुत ही खराब लागुथला सो आज एने हम पूरा कमिटमेंट कली जेमदी आज वीडियोटा अपलोड हबो सो मार्कर को ग्लूकोज दे देली एबे स्टार्ट करिया ओके सो एबे होची कोन बिट बी okay so now we'll check the solubility of gas in liquids okay liquid gas molecule okay done so
एबे कौन देखिबा सो आमे ऑलरेडी जान आगे मते एप्लीकेशन गोटे कहूची आमे समझते कोल्ड ड्रिंक्स पीछे ना नहीं सो कोल्ड ड्रिंक्स बोतल कौन थाए एटी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व ही थाए से जो ड्रिंक रे आमे जतल तार कैप खोलू किबा ता ढक्कनटा जतल खोलू आमे कौन देखू गोटे प्रेशर गोटे रिलीज हो गोटे बबल टाइप रो बाहर माने एमती फेन टाइप रो सेटा कौन सेटा हो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड ओके सो सेटा केमती से लिक्विड रे जाइथिबो एक्सेस प्रेशर देखी जाइथिबो ना ओके सो फर्स्ट पॉइंट हम देखिया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ओके फॉर एग्जांपल गोटे कंटेनर अछि एडी क्लोज अछि हला एडी गैस मॉलिक्यूल्स माने अछंती एडी लिक्विड अछि सो जेते हम ऊपर प्रेशर देबा माने एडी जेते प्रेशर देबा सेति कोन से गैस माने डिसॉल्व ही जे पूरा लिक्विड रे से इफेक्ट ऑफ प्रेशर माने को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओके इंक्रीजेस so if we increase the pressure the solubility will increase okay तापरे आकु बेस करके आसिले हम हेनरी ओके हेनरी लॉ रो स्टेटमेंट बहुत इंपोर्टेंट ओके सो हेनरी लॉ कौन कहले जेते अधिक प्रेशर दबो सेति की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड बढ़िबो ओके तापरे एबे टिके पूर्वरु आमे पढिचे कंसंट्रेशन टर्म सो कंसंट्रेशन टर्म रे आमे कोन पढिचे सॉल्यूटर केते अमाउंट डिसॉल्व ही अछि सेटा मेजर करछे आमे कंसंट्रेशन टर्म रे ओके सो एठी भी सॉल्यूटर केते अमाउंट डिसॉल्व ही अछि सेटा आमे केमति मेजर करबा बाय मोल फ्रैक्शन ओके सो एज पर हेनरी से मोल फ्रैक्शन टर्म रे से एटा मेजर करथिले सो से कोन कहिथिले ना द पार्शियल हां ए जो गैस माने ए जो लिक्विड सरफेस रे किमा सॉल्यूशन किछ ना किछ प्रेशर अप्लाई करथियो ना फॉर एग्जांपल देखो एट जरा अछि एट लिक्विड अछि एट गैस मॉलिक्यूल्स माने अछि ओके एट जेते हम वेट दबा एडी पार्शियल प्रेशर से गैस रो बढ़िबो ना नहीं से गैस कोन ए सरफेस रे अधिक प्रेशर एक्सर्ट करके भीतर को जीवो ए सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर बढ़ी जीवो ओके सो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to its mole fraction okay done okay so एडी proportionality को हटाए पे गोटे कांस्टेंट यूज करबा सेटा जे हेनरीज कांस्टेंट ओके सो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इक्वल टू kh into mole fraction okay done so this is the expression for Henry law okay so Henry law कौन कहले ना according to Henry's law the partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas which is present in the solvent okay so जेते प्रेशर बढ़िबा सेति मोल फ्रैक्शन किबा सॉल्युबिलिटी बढ़िबो ओके तापर सो आमे जदी ए जो ग्राफ को कंपेयर करिबा हम जदी मैथमेटिकली ए ग्राफ को कंपेयर करे ताले एटा को टाइप ऑफ ग्राफ y = mx टाइप ऑफ ग्राफ ना नहीं देखिया एटे भल एडी y एक्सिस रे अछि कोन अछि पार्शियल प्रेशर अछि m होछि स्लोप एडा होछि k होछि स्लोप आ x होछि हमरो मोल फ्रैक्शन सो हम केंदि प्लॉट करिया देखो सो एपर लिखिबा p एपर लिखे x सो हम जानछु एडा होछि ग्राफ ऑफ दिस एडा कोन स्ट्रेट लाइन ग्राफ माने ओरिजिन पास करियो एट इजी आ स्लोप के स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू k वेरी इजी ना नहीं डन तापरे अंक भीतर को रिलेशन अछि हम जदी k चाउ x भीतर जदी रिलेशन हम देखिबा ताले कोन अछि एट देखिबा ओके एट जदी प्रेशर जदी 1 हैला सो 1 इक्वल टू kh into psi ओके सो kh केते होबो 1 by मोल फ्रैक्शन ओवर सो जदी kh रो वैल्यू बढ़िबो ताले मोल फ्रैक्शन वैल्यू कमिबो एंड वाइस वर्सा ओके हम जान टेम्परेचर हां ए रिलेशन टा मन रखिबा सो टेम्परेचर बढ़ले kh बढ़े ओके क्लियर आ जदी kh बढ़े ताले सॉल्युबिलिटी कोन कमिबो ओवर एटा हमरे एमसीक्यू रे आसी पारे ओके सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the value of kh decreases and as kh is inversely proportional to mole fraction the mole fraction decreases okay done so एटा थिला हमरो गैस एंड लिक्विड रो सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखले ओके तापर आ गोटे जिंस अछि सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर गला ओके सेकंड होछि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कोन अछि सो पूर्व केस रे
कौन करते सॉलिड जदि आम टेम्परेचर बढ़ाऊे सो तार तार दुईटा केस आसला गोटे एंडोथर्मिक रिएक्शन में गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ओके एटी कौन हम ना एटी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो देखिए एटी कौन हम ना जो गोटे गैसियस सॉल्यूट जो लिक्विड मिसे से गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिए ओके एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कौन हीट कौन नेगेटिव हम माने हीट ऑलरेडी सराउंडिंग को रिलीज होची सो आम जब आउरी टेम्परेचर बढ़े ताले कौन हम रिएक्शन बैकवर्ड पड़ेबो ओके आउ गोटे टर्म अच्छे डिसोल्यूशन है डिसोल्यूशन माने कौन द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट इज नोन एज डिसोल्यूशन माने हम जो सॉल्यूट को जो मिसौचु से प्रोसेस ना होची डिसोल्यूशन ओके सो एट कौन हुए ना जो गोटे गैस को आम जो लिक्विड डिसॉल्व कलु से एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिए ताने कौन हीट रिलीज करे ओके सो से ऑलरेडी हीट रिलीज करूची आम जब आउर एक्स्ट्रा हीट दवा ताले कौन हो अकॉर्डिंग टू ले चार्टलेस प्रिंसिपल जोटे 11 क्लास रे अछि रिएक्शन टा बैकवर्ड पळेबो हला रिएक्शन टा बैकवर्ड पळेबो सो एतिकी थिला so this was the solubility of gas and liquids जोटी हमें देखले कि फर्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर कौन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कौन ओके सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर कौन आम कोल्ड ड्रिंक्स पीछे सब सो कोल्ड ड्रिंक्स से कौन थाए से कोल्ड ड्रिंक्स जो लिक्विड पोर्शन कौन थाए से कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगी थाए आम जो से ढक्कन खोलू ताले किसी बबल टाइप एमती किसी प्रेशर रिलीज हुए कौन रिलीज हुए कारण से गैस मान को प्रेशर देकी से डिसॉल्व कराई कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओके सो जिते अधिक प्रेशर दबा सेतिकी सॉल्युबिलिटी से गैस रो से लिक्विड रे बढ़िबो ओके आ से सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमें केमते मेजर करछे इन द टर्म ऑफ द मोल फ्रैक्शन ओके so according to Henry law the partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction एटी proportionality हटिला गोटे कांस्टेंट लागला से कांस्टेंट होची kh होची हेनरीज लॉ कांस्टेंट ओके तापर आंको इधर ग्राफ रो नेचर कोन इट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ which passes from the origin ओके आ जदी kh आ सॉल्युबिलिटी के kh आ मोल फ्रैक्शन भीतर जदी हम रिलेशन देखिबा ताहेले kh is inversely proportional to mole fraction or solubility okay मन रख solubility चाहे mole fraction से है okay solubility को हमें mole fraction through रे हमें measure करूँ okay so done so screenshot नहीं जाए आगो को पढ़िबा ना पढ़िबानी किए किसी मेसेज करना दी किए जणे अच्छी बट से जणे किसी कहू नहीं कौन कंटिन्यू करवा तो मु लिखौची वीडियो पॉज कर दिया मु लिखौची या स्क्रीनशॉट नहीं जाओ सो फाइनली हम थर्ड टॉपिक भी सरुची सेडा होची सॉल्युबिलिटी ओके सो को तीनटा टॉपिक सरेला बट टिके टाइम टेकिंग लागिला एबे घंटे 10 मिनिट ही जेबो वीडियोटा एक्चुअली वीडियो अपलोड करने को बहुत कष्ट होची कारण लास्ट वीडियो अपलोड करथली 11 मिनिट्स सेरा नहीं थिला मते 2.5 आवर्स अपलोड करिया को आ एटी नेट भी टिके स्लो अछि सो मु भाबली कि लाइव टा करके ट्राई करे कोन होची एंड टिके नर्वस भी थिली बट एबेडी कॉन्फिडेंस फील होची ओके सो हम कोन पढ़ले आ थ्रीडी देख दबा सो हमें कौन पढ़ले इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सहिला ओके नंबर 2 रे पढ़थिले हमें कंसंट्रेशन टर्म्स ओके
नंबर 3 रे पढ़थिले आमे एबे जस्ट पढ़ले सेरा होची सॉल्युबिलिटी ओके सो आई होप किसी ना किसी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हेतिबो आई नो 100% क्लियर न हेते बट समथिंग विल बी एडेड टू योर नॉलेज ओके सो देखा जाउची सो एबे नेक्स्ट टॉपिक जोड़ा हम पढ़िया को जाउचे ओके सो नेक्स्ट स्टेप पढ़िया को जाउचे हमें वेपर प्रेशर ओके क्लियर सो हम समस्त पानी बसै दिउ जदर पानी को हम गरम करथिबु वाटर को जो बॉयल कर आम हिट दौतु ना नहीं सो 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 हिट देले कौन होतो एडी वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर माने एडी फॉर्मेशन होंदी ना नहीं सेड वेपर्स माने फॉर्मेशन होंदी ओके सो आम जब वाटर को बॉयल करो कौन हुए सो वाटर लिक्विड सॉल्यूशन सेटा किंतु हिट कला पर कौन हुए ऊपर आम देखिए ए पार्टर कौन थाए ए पार्टर वेपर्स माने सब बाहरती ना नहीं सो सो वेपर माने ए जो लिक्विड सरफेस रे ए पार्ट रे किसी ना किसी प्रेशर एमती एमती क्रिएट करथुवे ना नहीं ऑब्वियसली करथुवे ओके सेटा होची वेपर प्रेशर ओके आमे केम डिफाइन करबा now the vapor pressure is the pressure which is created by the vapors of the liquid above the surface on or near the surface of the liquid okay the partial pressure exerted by a gas or a vapor at the surface of the liquid okay at or above the surface of the liquid जहाँ भी हो ए पार्ट रे जति के प्रेशर से क्रिएट करियो above the liquid surface is called as vapor pressure okay clear the partial pressure exerted by gas or vapor at or above the liquid surface is known as vapor pressure done एबे देखिबा को फैक्टर अफेक्ट करे वेपर प्रेशर को factors affecting vapor pressure okay done so number 1 factor is temperature हमें समझते जानचु कौन हो if we increase the temperature more vapors will form easy okay so vapor pressure directly proportional to temperature जते temperature दो सेतिकी मोशन हम सेतिकी एनर्जी क्रिएट हम सेतिकी मॉलिक्यूल्स माने वेपर स्टेट रे जिबे आ सेतिकी एई जगह रे प्रेशर क्रिएट हो ओके सेकंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस ओके सो जो सब्सटेंस हमें नै छु हला तांको भीतर जदी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जदी मोर थिबो माने मॉलिक्यूल धर अछंदी तांको भीतर कोन जदी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर थिबो माने कोन से माने सेमने पूरा स्ट्रांग बॉन्डिंग हे किथिबे सो स्ट्रांग बॉन्डिंग हेती माने कोन और अधिक टेंपरेचर देले जाएंगे से माने वेपर प्रेशर माने मोर वेपर ना नहीं सो नेचर ऑफ द सब्सटेंस कोन जदी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जदी मॉलिक्यूल भीतर बेसी दिबो साल और टेंपरेचर हमको दबा पड़िबो सो वेपर प्रेशर हबो सो इट कोन हबो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ओके जदी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक थिबो से माने बेसी जल्दी वेपर स्टेट रे जिबेनी सेत बाय वेपर प्रेशर कमी जिबो हला आ तो उल्टा कोन जदि दुटा मॉलिक्यूल भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम अछि ताल वेपर प्रेशर इजी अछि ओके आराम से माने वेपर करिवे ओके नंबर 3 प्यूरिटी ऑफ सब्सटेंस ओके
सो प्यूरिटी ऑफ सब्सटेंस कौन जदि खाली पानी अच्छी से आराम से वेपर क्रिएट करदेला इजिली बॉइलिंग वाटर किंतु जदि वाटर कौन करबा आम डिफरेंट सॉल्यूट्स द्वारा आम मिक्स करदे वाटर ताल कौन हम वेपर प्रेशर कमी जीव कौन पाई कारण डिफरेंट मॉलिक्यूल्स माने आसी गले सो तांक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम सो सेति इजिली वेपर हबो नाही जति कि गोटे प्योर सॉल्वेंट रे होतला ओके सो प्योर सॉल्वेंट हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर when solute is mixed and a both important concept when solute is mixed what happens vapor pressure decreases okay done clear आ गोटे पार्ट अच्छी से बॉइलिंग पॉइंट ओके ऑलरेडी पढ़ीचे आउट थर पढ़िया सो बॉइलिंग पॉइंट मान कौन मोर बॉइलिंग पॉइंट मान कौन बेसी टेम्परेचर दरकार हीट अप करने जमी वेपर फॉर्म हम सो जिते मोर बॉइलिंग पॉइंट से लेस वेपर प्रेशर बीपी है उल्टा कौन हम जिते जल्दी बॉइल होती माने लेस टेम्परेचर जब बॉइल होती है इजिली वेपर क्रिएट कर so more vapor pressure okay so less the boiling point more is the vapor pressure because more vapors are formed at the surface of the liquid and they exert more pressure here okay so these are the four factors जोटा कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करे सेटा होची टेम्परेचर so vapor pressure is directly proportional to temperature जेते टेम्परेचर देबा सेते वेपर हमर क्रिएट हो नेचर ऑफ सब्सटेंस माने कोन जदि गोटे गोटे सॉल्वेंट आम नहीं जदि से मॉलिक्यूल्स मान भीतर जदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक अच्छी तामाने कौन से माने सेते जल्दी वेपर्स क्रिएट करेंगे ना ओके तापर जदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम अच्छी दे हेट इच अदर द मॉलिक्यूल्स हेट इच अदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन दे विल इजिली फॉर्म द वेपर्स ओके एंड मोर विल बी द वेपर प्रेशर ओके देन कमिंग ऑन टू प्यूरिटी ऑफ सब्सटेंस ओके a pure substance has more or maximum vapor pressure okay but if we dissolve some solute in that the vapor pressure will decrease okay because it will interact with that molecule some bonding will be formed some force of attraction will be there okay so obviously the vapor pressure will decrease okay then the boiling point we know more the boiling point less is the vapor pressure okay more the boiling point means what the molecules are taking much more time to form vapors okay but if a substance has less boiling point then it will easily form more vapor so the vapor pressure will be more done so this was the concept of vapor pressure and the factors affecting the vapor pressure सो मोर आप करछि फोर्थ में पढ़ुछे वेपर प्रेशर ओके सो इज एनीवन देयर से जणे ही अछि बट की अछि जानि नहीं ओके सो एबे पढ़िबा राउल्ट्स लॉ ओके सॉरी फर्स्ट पढ़े व्हाट इज वोलेटाइल सब्सटेंस सो वोलेटाइल सब्सटेंस माने कौन जे इजीली उड़ी जाउथबो वेपर फॉर्म करथबो
evaporate होतिबो gaseous form रे exist कोड करथिबो सेडा ही तो volatile substance ओके सो ए volatile substance को नहीं कि हमर Raoult law okay so Raoult law is applicable to volatile substances okay but Henry's law सब solutions by सब liquid solutions by apply होतले okay so Raoult's law कौन कहला ना volatile substances by for any volatile substance the partial pressure is directly proportional to the mole fraction same जिनस सेपटे जा पड़ले एडी से ओके सो एडी कौन सेम कौन volatile substance पे जो partial pressure directly proportional to mole fraction okay clear okay so गोटे कंडीशन लागला सेटा जो फॉर volatile substance okay एबे हम डिफरेंट केस नबा ओके सो सो केस वन कौन हबो एडी हम volatile solute plus volatile solvent कथा करिया जोटा मिसी कोन सॉल्यूशन दो ओके क्लियर सो एडी हम दीटा सब्सटेंस को नबा फर्स्ट सब्सटेंस भी volatile अछि सेकंड सब्सटेंस भी volatile अछि ओके फॉर एग्जांपल सो फर्स्ट केस रे हम कोन करिया इंडिविजुअल हम नै गेल ओके एडी से volatile सब्सटेंस ता अछि एडा मन रखिबा हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पे कथा हो जे कंफ्यूज होबनी हमें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस पे हमें कथा हो छे डन ओके सो volatile solute से भी लिक्विड फॉर्म रे अछि volatile सॉल्वेंट से भी लिक्विड फॉर्म रे अछि से दियन कर कैपेबिलिटी अछि वेपर क्रिएट करबा पाई ओके सो एट जदी ए कंपोनेंट जदी ए नबा हैला क्लियर सो द एडा इज द प्योर फॉर्म ए जो volatile solute हैला एपडे जो volatile solvent नै जो ओके आर भी वेपर्स होते हो ना नहीं एडा होची बी ओके एडा ता प्योर फॉर्म ओके सो फॉर एग्जांपल आर प्योर फॉर्म रे जो पार्शियल प्रेशर एडी होची सेरा होची पी नॉट ए ओके कोन पी नॉट ए जस्ट गोटे नोटेशन एडी होची पी नॉट बी डन क्लियर सो एबे किछ असुविधा नै ए भी volatile अछि आर भी वेपर्स होची ये भी volatile अछि आर भी वेपर्स होची ओके एडी किछ असुविधा नै आउ ए जो एमान को मोल फ्रैक्शन केते होची x ए मॉलिक्यूल्स मान को मोल फ्रैक्शन केते होची x भी होची ओके सो द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन आरो केते अमाउंट डिसॉल्व ही के होची सेरा तो मोल फ्रैक्शन ओके कि मात्रा सॉल्युबिलिटी ओके बट एबे कोन हला एबे हमें ए दिरा सॉल्यूशन को मिसई देले ओके सो मिसैला पर कोन हला एबे आर भी मॉलिक्यूल हे गला ना नहीं अंकर वेपर चला क्लियर बट एबे कोन देखिबा फास्ट जेति की प्योर फॉर्म रे थिला सी आराम से वेपर करतो लेकिन एबे कोन एबे सी आउट ए मॉलिक्यूल सन मिसी करछि सो त अमाउंट रे कमी जे माने जो रेट रे वेपर फॉर्मेशन होतला से रेट रे हबो नै सो एडी प्रेशर ता कमी जिवो के सो एडी टोटल प्रेशर केते हबो ताले ए सॉल्यूशन रे टोटल प्रेशर केते हो सो का प्रेशर अछि एडी प्रेशर ऑफ ए भी अछि प्रेशर ऑफ बी भी अछि ना नहीं एडी खाली पी नॉट हेतला एडी खाली पी नॉट बी थिला एडी कोन पी ए प्लस पीबी सो हम लिखिया सो टोटल प्रेशर कोन हो पी ए प्लस पीबी ओवर हैला तापर हम कोन जानछे जदी आ कथा कहबा जदी पी ए एडी पी ए कोन आर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जोडा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ना नहीं एबे हम पढ़छे जस्ट राउल्ट्स लॉ सो आको हटे देले कोन आको हटे के हमें पी नॉट ए पुट करन दिबा पुट करिबा ओके एडी पी नॉट ए पुट हेछि पी नॉट ए माने एडी प्योर फॉर्म रो वेपर प्रेशर ओके एडी सिमिलरली कोन हो एडी पीबी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सो कांस्टेंट जदी हटेगा पी नॉट बी होछि प्योर फॉर्म रो माने बी कंपोनेंट रो प्योर फॉर्म रो पार्शियल प्रेशर ओके डन एबे मिसई की एडी वैल्यू पुट करिया एडी पी जगह कोन पुट हो पी नॉट ए एक्स ए एडी पी बी जगह कोन पुट हो पी नॉट बी एक्स डन सो दिस इज योर total pressure of this
सॉल्यूशन जेतले आमे देडा मिसे देछ ओके एडी मिसला पर कोन हैला एडी टिके वेपर प्रेशर टा एडी कमी जिवला एडा होची प्योर फॉर्म रो एडा होची सॉल्यूशन क्लियर एडी आउ गोटे जिनस आमे कंसीडर करिबा एडी पी नॉट ए टा ग्रेटर देन पी नॉट बी मन माने आरो बेसी पार्शियल प्रेशर अछि देन दिस ओके तापरे जदी एटा को आमे किछि चेंजेस आनिबो ओके आमे कोन जानछु आमे जानछु मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1 आमे जानछु गोटे सॉल्यूशन ने जेतरा कंपोनेंट थांदो से समस्त को मोल फ्रैक्शन जदी मिसे देबा सेटा इक्वल टू 1 हो ओके सो एडी एक्स बी जार आमे कोन एडी कोन पुट करि परिबा 1 माइनस एक्स पुट करि परिबा ना नहीं सो आमे जदी पुट करिया कोन हो प्लस एटा कोन हो पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ना नहीं क्लियर ओके सो एडी कोन कॉमन नहीं होबे देखिबा हां एई दिटा टर्म को पाखा के आनले एडी एक्स कॉमन है ओके सो कोन करिया पी नॉट एक्स से माइनस पी नॉट बी एक्स बी सॉरी एक्स है प्लस पी नॉट बी सो कौन हो एडी एक्स कॉमन हो गला सो आगे जदी एई टर्म टा लिखिबा माने आगे जदी पी नॉट बी लिखिबा प्लस कौन हो एडी एक्स कॉमन हो गला सो एक्स कॉमन हो गला ब्रैकेट रहला कौन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हे गला ये आ गोटे एक्सप्रेशन हो गला एटा कोन हमको प्रूफ करछ देख एटा में कोन कंसीडर करछ वोलेटाइल सॉल्यूट अछि वोलेटाइल सॉल्वेंट अछि सॉल्यूशन होछि आ सेकंड कोन कंसीडर करछ एडी फर्स्ट कंपोनेंट रो पार्शियल प्रेशर माने प्योर फॉर्म रो अधिक अछि देन सेकंड एटी सेटा प्रूव हो गला देखो कारण एटी पी नॉट ए रो माइनस होछि पी नॉट बी माने एटी पी नॉट अधिक अछि ओके सो इन दिस फर्स्ट केस वी हैव डिस्कस्ड दैट we have a volatile solute we have a volatile solvent and second condition the partial pressure of this volatile solute in the pure form is more and the partial pressure of this volatile solvent is less okay so this is the pure form of A this is the pure form of B okay but when we mix this what happens the vapor pressure decreases why because here it was pure molecules okay but here it is mixed with some other molecules so there will be some sort of force of attraction which will be there between them okay so that's why the partial pressure will decrease but if you find the total pressure so the total pressure of the solution will be Pa plus Pb okay so what is Pa so here we have found out Pa so Pa is direct proportional to this mole fraction of A we have studied okay so if we remove this proportionality so we get a constant that is P naught A that is pure form so same it is P naught B that is pure form okay so after that we'll just replace these values okay and you know that the total mole fraction of different components in a solution is equal to 1 okay so here we substitute xb in terms of 1 minus xb okay so why we did that because we wanted to prove this formula that P naught A is greater than P naught B so after replacing it we took common xa so here we got P naught B plus xa P naught A minus P naught B okay done so here is one formula and here is about Raoult law okay done okay
सो एटा फास्ट केस गला ओके एक्चुअली कौ सब कवर अप हो गलानी सो देखिए केते पर्यंत जाउची सो लेट्स चेक हाउ मच वी कैन स्ट्रेच फोर्थ टुडे ओके सो सो तापर कौन अच्छी देखिए सो एबे हमें देखिबा सो फ्रेंड्स आम गोटे टॉपिक पर मुझे ट्राए करी लेक्चर एंड कर ओके सो आम कौन कौन देखते सो सो केस वन आम कौन पढ़ले सो केस वन आम पढ़ले कि वोलाटाइल सॉल्यूट सहित आम कौन वोलाटाइल सॉल्वेंट मिक्स कले ओके वोलाटाइल सॉल्यूट सहित वोलाटाइल सॉल्वेंट मिक्स कले आ सेकंड कंडीशन कौन नहीं पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी ओके सो एबे टिके ग्राफ देखिबा ओके सो आम कौन करथिले मोटे मन पकई दोछि सो आम दुईटा फास्ट नहीं थिले एटा द प्योर फॉर्म थिला एटा द प्योर फॉर्म थिला एटा कंपोनेंट ए थिला एटा कंपोनेंट बी थिला ओके आर आर प्रेशर थिला पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए आर प्रेशर थिला पी बी रो पी नॉट बी एक्स बी ओके तापरे से मानू मिक्स कला पर कौन है सो मिक्स कला पर आमर टोटल प्रेशर होता पी ए प्लस पी बी ओके विच इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स सी तापर आम कौन करते आम एक्स बी जगह पकई वन माइनस एक्स ए प्रूफ करने यहाँ को सो आम कौन एक्सप्रेशन बाहर आम एक्सप्रेशन बाहर पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ओके सो एतिक से गोटे ग्राफ देखा जदि ए ग्राफ देखा सो ए ग्राफ कौन कहूँ पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ओके ये भी को फॉर्म वाई इक्वल टू एम एक्स ए ग्राफ ना नहीं ए ग्राफ इजी सो सर कोड पास कर हम जब ये कंटिन्यू सो सो वाई एक्सिस कौन अच्छी प्रेशर अच्छी एक्स एक्सिस कौन अच्छी मोल फ्रैक्शन अच्छी ओके क्लियर आउ एटा ओरिजिन एमती पास करियो ना नहीं क्लियर सो देखिबा जदि एक्स रो वैल्यू 0 अछि ताले पी रो वैल्यू केते हो 0 हो सो ग्राफ टा 8 स्टार्ट हो 0 डन ना नहीं तापरे आमे जान छ एक्स रो वैल्यू 1 माने कोन 8 जदि एक्स रो वैल्यू अछि एटा जदि एक्स रो वैल्यू 0 हैला कारण एडी हम प्रूव कले जदि एक्स रो वैल्यू 0 पकेबी एडी प्रेशर 0 आसीओ सेत पे ओरिजिन 0 अछि एडी प्रेशर टा 0 अछि तापर आमे कोन जान छु मोल फ्रैक्शन रेंज कौन 0 to 1 आम जानू सो एपट जदि एक्स वैल्यू 0 है सो एपट आसु आसु 8 एक्स वैल्यू केते हो 1 हम सो 8 जदि एक्स इक्वल टू 1 पुट करियो तारे एडी पी वैल्यू केते हो एडी पी नॉट इंटू 1 व्हिच इज इक्वल टू पी नॉट ओके ता माने कोठी हबो जदि 8 एक्स हैला ताले जदि मो एपट पार्ट मो आउट के प्लॉट कली ओके ताले कोठी हबो 8 देखियो एक्स इक्वल टू 0 हेले 8 प्रेशर वैल्यू 8 0 अछि तापर x इक्वल टू 1 हेले p एर वैल्यू होछि p नॉट ए ता माने एटा होछि p नॉट ए बुझ पइलो एटा कोन एटा होछि मैक्सिमम प्रेशर जोटा क्लियर वेरी इजी ना नहीं सिमिलरली आमे जदि p नॉट b को एपडे प्लॉट करिया माने एपड साइड रे देखो एटा टोटल मोल फ्रैक्शन एटा ओके एपड जदि x एर कंपोनेंट जदि 0 टू 1 अछि एपडे x
x 0 अछि माने x0 वैल्यू केते थिबो 1 थिबो कारण x प्लस xb इक्वल टू 1 एपडे x0 वैल्यू केते थिबो 0 थिबो ता माने xb कंस्ट्रक्शन ता में एपडू चेक कर आसी ओके सो एबे एबे 8 वैल्यू पुट करिया इफ xb इक्वल टू 0 ताले pb केते हो 0 हो सो 8 देखिए xb 0 सो pb 0 माने ए पार्ट रे pb 0 अछि ओके नेक्स्ट xb जदी 1 नवा ताले pb केते हो एटा 1 into p naught b which is equal to p naught b xb1 कोटी अछि देखिबा xb0 xb1 माने 8 अछि xb1 ने pb रो वैल्यू अछि p naught b माने 8 p naught b होबो एटा काइडी तळे कली कारण जेतु p naught एटा ग्रेटर अछि p naught b सेट माने तळे कली सो देखो एबे कोन हला देखो एबे एटा 8 प्लॉट हो एबे एटा म एड कर दोछि एटा होछि p naught a एट देखो इजी हला नै ने वेरी क्लियर देखो 8 कोन एबे एटा कोन कले x रो वैल्यू 0 थिला 8 ओके 0 रे प्रेशर वैल्यू 0 अछि सो 8 0 अछि प्रेशर वैल्यू तापर जेतल xb को 1 नै गेले 1 माने एपर साइड को आसले सो कंस्ट्रक्शन बढ़ेले सो pb इक्वल टू p naught b सो एपर साइड आसले एई पार्ट रे हमर मैक्सिमम प्रेशर होबो जोडा कि p naught b जोडा कि प्योर कंपोनेंट b रो ओके आ एपटे करथिले एपर साइड रो मु काहे कि दीटार शो कले कारण दीटार शो कले ओटे कंपैरिजन ने इजी होबो ओके सो एपटे हम कोन देखथिले जदि p naught जदि x रो वैल्यू 0 हला तले p इक्वल टू 0 ए x रो वैल्यू 0 p 0 तापर जदि x रो वैल्यू 1 हला एडी p हबो इक्वल टू p naught सो एपटे x रो वैल्यू 1 एपटे होची सो p naught होची ओके सो दिस इज द प्योर कंपोनेंट रो प्रेशर ए कंपोनेंट में एडा होची b कंपोनेंट में एडा डी ऊपर रहबो एडा डी तळे रहबो कारण हम अजम्पशन नै जे कि p naught इज ग्रेटर देन p naught ओके सो दिस इज योर एडा ए कंपोनेंट में एडा b कंपोनेंट में तापर एडी टोटल प्रेशर पे बढ़िया भाग करिया ना ओके सो हमको दीटा पॉइंट मिल गला हम ताको जॉइन कर देबा एडा होची टोटल प्रेशर वेरी इजी क्लियर ना एडा होची टोटल प्रेशर देखो आरो भी हमें ग्राफ शो करिबा केमती ए फार्मूला देखिबा 8 जदि x रो वैल्यू में 0 पुट कले कते होबो ए पार्ट 0 हो गेला सो pt इक्वल टू p naught b होबो सो p naught b होबो देखो x 0 रे 8 p naught b मु तीनटा ग्राफ को एका सारे कहूची 8 जदि x 0 हैला 8 pt इक्वल टू कोन ए पार्ट 0 हो गेला सो p naught b सारे इक्वल होला डन 8 जदि x 1 हैला कोन 8 x 1 हैले 8 pb b कैंसिल हो जो p naught रहबो सो x 1 है p naught ओवर सो ए इधर पॉइंट को जॉइन कर देबा एटा जो टोटल प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर पॉइंट ओवर डन क्लियर सो फाइनली हमर ग्राफ बेसला मु ग्राफ आउथरे कहूची आउथरे ग्राफ टा कहबा सो वंस मोर we will discuss the graph so see it very easily okay the graph is very easy once you do it will be very easy for us okay okay so check it is anyone there so check it आउ थे में ग्राफ कंपेयर करिए ओके सो फर्स्ट कंपोनेंट रो कौन थिला p इक्वल टू p नॉट ए x ओके सेकंड कंपोनेंट कौन थिला pb इक्वल टू p नॉट b xb तो टोटल प्रेशर के थिला pa plus ab एडा लिखले प्रैक्टिस हो ओके व्हेन यू राइट इट यू विल गेट दैट ओके एंड एक्स बी जगह 1 माइनस एक्स पुट कले सो फाइनली कोना कोना हमको मिलता पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी सो दिस इज वन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन okay so we will plot the graph of 1 2 and 4 okay so 1 2 देखिबा एटा को फॉर्म अछि y equal to mx फॉर्म रे which passes through the origin okay so हमें जदी डबल जदी
आम क्रिएट सो वाई रे कि अच्छी एट प्रेशर अच्छी एक्स रे कि अच्छी मोल फ्रैक्शन अच्छे आम जब दीटा को जब कंबाइन करें एपट जब ए पार्ट है एपट जब बी पार्ट है सो एपटे बी पार्ट प्रेशर है माने सेम अच्छी एपटे मोल फ्रैक्शन ओके सो आम आगे फास्ट देखा if we put xa equal to 0 so this is the range of mole fraction and range of mole fraction कौन है xa plus xb equal to 1 okay so from here it will be 0 here it will be 1 okay if we put xa equal to 0 here so here xa will be 1 or not okay so now see if we put xa equal to 0 here so pa will be equal to p naught okay that means here it is pressure so here it will be 1 point okay next if xa equal to 1 pa equal to 1 into p naught a माने it maximum pressure haba for example here it is plot the graph here it is very easy so now we plot here done next if xb equal to 0 pb equal to 0 so for example here it is xb is 1 xb is 0 okay because xa is 0 means what xb will be 1 because total mole fraction is 1 so if xb is 0 so pb is 0 so if xb is 0 so pb is 0 this is pb done pb is 0 na next if xb is 1 means here then pb equal to p naught b so p naught b will be here somewhere easy done so from here we started from 0 to maximum done and the condition was p naught a is greater than p naught b so if we compare p naught a and p naught b p naught a is up okay very easy now we compare this graph okay so this is y equal to mx plus c so this is p naught b so this is p naught b this is the slope and x is the mole fraction so what we'll do so this was the individual pressure this is pa pb now if we join this point this is your total pressure because you got 2 points here also if you put xa equal to 0 you will get pt equal to p naught b because this will be 0 so p naught b next if xa equal to 1 here pb will cancel p naught a so x equal to p naught a so we join these 2 points we get the total pressure done अब गोटे रहा so one more this is so this was case 1 okay so what we studied in case 1 volatile solute volatile solvent okay and the second condition is p naught a माने first component रो pure component रो vapor pressure will be greater than second pure component okay so this is the first part we have completed and एडी कोन कोन हम सिखले एडी ग्राफ हम सिखले very easy graph फॉर्मूला शिखले जोटा कि न्यूमेरिकल्स में आर्टिस्ट ओके एबे केस 2 देखिबा एबे केस 2 रे कोन हबो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हबो वोलेटाइल सॉल्वेंट हबो ओके सो एडी कोन हबो सेकंड केस रे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट So now we'll check the okay. So now we'll check the non-volatile solute plus volatile solvent. In the previous case, what was the consideration?
Now the solute was also volatile, the solvent was also volatile, so both found vapors, so both partial pressure or vapor pressure was calculated. Okay, but here it is non-volatile solute and volatile solvent, so here no partial, no vapor pressure, non-volatile na, so vapor pressure, here vapor pressure will be counted. Okay, for example this is the solvent, for example this is A. Okay, so these are the vapors. Okay, so here also partial pressure is A and mole fraction is XA. Okay, so here also PA will be how much? P naught XA. Okay, clear? Remember this, whenever we add a non-volatile solute to volatile solvent, the vapor pressure decreases. Okay, what will happen? Vapor pressure decreases. Okay, why? See, for example, so here it was pure solvent. Okay, it is solvent amara pure thila. Okay, but एबे कौन है ला? एटी non-volatile solute एटी add है ला. Okay, यदि solution हमें करिवा, एटा धर non-volatile solute अछि. Okay, एटा धर volatile solvent molecules अछंती. एबे कौन है जिवो? ताको ता भीतर बॉन्डिंग हे जिवो, सो किछि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थिबो. आगुर कौन थिला? एडी before what was that? What was the scenario? Here only the solvent molecules were there. There were no hindrance. There were no other molecules. So it was very free to form its vapors. It the solvent molecules माने freely vapor करथिला. किंतु एबे कोन होतिला? एबे कोन हैला? It non volatile solute add हे जाइछ volatile solvent रे. So एट कोन हैला? ए solute जाय कि ता संगे किछि बॉन्डिंग करिवो, सो किछि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होइबो, जोदि पई कोन हबो? वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. ओके, सो एडी हमें कार प्रेशर कंपेयर करिया, से पी रो कंपेयर करिया, कारण आर तो काउंट होबन ना. सो एबे चेंज इन प्रेशर कोन हबो? एबे चेंज इन प्रेशर, फॉर एग्जांपल एडा होची पी नॉट, एडा होची प्योर फॉर्म रो थिला. ओके, एडा धर पी ए, एडा होची सॉल्यूशन फॉर्म रो हेला. सो कोन हबो? सो चेंज इन प्रेशर कते हबो? चेंज इन वेपर प्रेशर कते हबो? इनिशियली के थिला मैक्सिमम थिला पी नॉट ए, एबे कोन हला? कमी गला. वेरी गुड. ओके, क्लियर. सो दिस इज आवर आउसरे का ऊपर डिपेंड कला. हां, एट गोटे फैक्टर एटा का ऊपर डिपेंड कला? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. सो ताको हम रिप्रेजेंट करिया xb, एटा जे बी कंपोनेंट सॉल्यूट. सो एटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. डन ना? नहीं, xb ऊपर तो डिपेंड कला ना, आर पार्टिकल से एड अप हेले बोली. सो आर पार्टिकल्स कंसंट्रेशन को हमें केमि मेजर करियो? xb संगे ओवर. सो द चेंज इन वेपर प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड del p, which is called इनिशियल के थिला मैक्सिमम थिला p नॉट ए, एटा p नॉट ए प्योर फॉर्म रो, एटा p नॉट ए होची प्योर फॉर्म रो. एटा एबे कोन हला? माइनस p हे गला. एटी एटा कोन अछि? xb अछि, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू xb. ओके, सो कोन हो एटी ना? p नॉट a माइनस p a, एटी कोन हो? xb इनटू कोन हो? इनिशियल के थिला p नॉट a थिला. सो फाइनली फॉर्मूला हमर कोन भाला? p नॉट a माइनस p a डिवाइडेड बाय p नॉट a xb. डन. सॉरी फ्रेंड्स, ये गोटे जगह मुझे भूल कर आम नहीं कौन आम जाने प्योर फॉर्म रे पी नॉट ए. ओके, ये जो सॉल्यूशन जो क्रिएट है ये सॉल्यूशन आम नहीं पी ए व्हिच इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स. ओके, सो ये भी ठीक अच्छी, किंतु आम गोटे जगह कौन करछे ना, ये गोटे जगह भूल अच्छी. आम जदि आउ थे देखा
सो जो चेंज इन वेपर प्रेशर टा हैला ओके ए जो चेंज इन वेपर प्रेशर टा का पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पाए हैला ओके सो एबे कोन हैला एटा एबे पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ओके सो पी फॉर्म रे आम देखु एटा हूँ चेंज इन वेपर प्रेशर ओके एक्स भी चाहिए आम कौन पुट कर 1 माइनस एक्स सो कौन हम ये एटा आमर मिलगला क्लियर सो यहीटा आमर एक्चुअली यही पार्टा कंप्लीट करने सहित आम गोटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आम कवर करदे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ओके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर माने कौन फास्ट गोटे प्योर सॉल्वेंट थिला सेठी जेतले आम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड अप करदेले तार वेपर प्रेशर कमी गला से सॉल्यूशन सो सेटा ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ए जो फॉर्मूला आम पाइले डेल पी सो डेल पी इक्वल टू इनिशियल के थिला प्योर सॉल्वेंट पी नॉट ए माइनस पी है सॉल्यूशन ओके सो सर इक्वल है का संगे पी नॉट ए इंटू एक्स बी ओके सो एटा जी एपड़ू नहीं आसला ताहले चेंज इन वेपर प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी माने कौन एट बी होची जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आमे एड अप करथिले से ता संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज of solutions are those properties which depends on only on the quantity of solute so a quantity of solute add kala pare vapor pressure kami gala that is del p by p naught a is equal to xb okay so finally vapor pressure is over okay आउ जति टॉपिक अछि मो अल्प टाइम रे साथ देबी कारण ऑलरेडी 2 आवर्स हे जिवो एंड एटा शॉर्ट रिविजन जमार भी हेलानी मु भाभी मु शॉर्ट टाइम रे रिविजन कर देबी आई थॉट आई वुड कंप्लीट इट इन वेरी लेस टाइम बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम बट प्लीज फ्रेंड्स जे जे देखी जो एटलीस्ट किसी कमेंट मेंशन करियो जेमति मु जानि तुम किसी बुझिलो या नाही फॉर दोज हु वॉच दिस वीडियो और एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो प्लीज write some comments in the live section or after this video will be uploaded so that I will know if this helped you or not in at least 1% if it is helping you or not. Okay. सो मुझे मार्कर को टिके चिन्ह दे दूची तुम टे पानी फाणी पी दियो जी अच्छा सो फ्रेंड्स मार्कर को मु इंक पे देली सो हमें कौन सो व्हाट वी हैव डिस्कस जस्ट आई एम राइटिंग द टॉपिक्स ओके सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड introduction and types of solutions okay number 2 we discussed concentration terms okay so we are just having a revision of what we have discussed
सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सीख लिया हमें? परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तापरे मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम. ओके डन. तब नंबर थर्ड रे कौन सीख लिया हमें? सॉल्युबिलिटी. ओके am I audible? So solubility. Okay, so solubility under आमे कौन सीखले? Solids in liquids, okay, and gases in liquids. एडिया में पढ़ले हेनरीज लॉ. ओके, हेनरीज लॉ कौन कहला? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. देन नंबर 4 रे कौन पढ़ले एबे जरा जस्ट कंप्लीट करले वेपर प्रेशर. ओके, वेपर प्रेशर कार्गो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस. ओके, सो वेपर प्रेशर अंडर कौन पढ़ले? केस 1 पढ़थिले कौन? भोलाटाइल सॉल्यूट प्लस भोलाटाइल सॉल्वेंट. ओके, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी भोलाटाइल. तापर कौन कौन फॉर्मूला पढ़थिले ना? पार्शियल प्रेशर ए थिला पी नॉट ए. रॉल्स लो पढ़थिले एटी नाही. सो टोटल प्रेशर केते हला? पी ए प्लस पी बी. तापर फॉर्मूला हमें पढ़िथिले. तापर ग्राफ्स भी देखथिले. ओके, सो ग्राफ्स केम देखा होतला एमती. सॉरी. ओके, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन क्लियर. तापर केस 2 देखथिले. केस 2 रे कौन देखले? केस 2 रे कौन देखले? नॉन भोलाटाइल सॉल्यूट प्लस भोलाटाइल सॉल्वेंट. ओके डन. एटी जोड़ा पढ़ले आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सो चेंज इन वेपर प्रेशर बाय इनिशियल वेपर प्रेशर दी पी नॉट नहीं थिले सेरा कास एंड प्रोपोर्शनल लेथिला इक्वल टू एक्सबी सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ. ओके, सो एतिके आमे कवर अप करिले. So friends, आमे एतिक पार्ट एपर्यंत कंप्लीट करछे. So we have completed this much portions till now. Okay, so we have studied the introduction and the types of solutions. We have studied the concentration terms, percentage weight upon weight, percentage volume upon volume, percentage weight upon volume, molarity, normality, mole fraction, molality, normality, molality, mole fraction and ppm, parts per million. Then we have studied the solubility, that is solids in gas, what are the factors affecting, gases in liquids, what are the factors affecting and applications, and about Henry's law. Okay, then we studied about vapor pressure of liquid solutions. Okay, so we have studied two cases. In case 1, volatile solute plus volatile solvent, what was the partial vapor pressure and what was the total pressure and what was the graph. In case 2, we studied about a non-volatile solute. When added in a volatile solvent, it decreases the vapor pressure of the solution due to the addition of this non-volatile solute, which is indirectly a colligative property which will be studied ahead again, that is relative lowering in vapor pressure, and the formula is change in vapor pressure divided by original vapor pressure is equal to mole fraction of the solute. Okay,
So, after this, so the next topic is ideal and non-ideal solution. Okay, so now we'll study about the ideal and non-ideal solution. After that, azeotropes. Okay, and after azeotropes, there is colligative properties and abnormal molar mass or Van't factor. Okay, so 5, 6, 7. There are 3 more long topics which are there. So, let's see. So now we'll discuss about ideal and non-ideal solution, which is very important, and also it will be asked in your exam for sure. Okay. So we'll start with so let it be there. We will study here. Okay. So ideal and non-ideal solutions. Okay, so first we'll study about ideal solutions. Okay, so what is an ideal solution? There are 6 points that we have to remember. Number 1 point. So here we have studied what? Raoult's law. Okay, simple. So ideal solutions are those solutions which follow Raoult's law over the entire range of concentration. Entire range of concentration means what we studied here. We studied partial pressure versus mole fraction. Okay, so for the entire range of concentration of the mole fraction, they should follow Raoult's law. Okay, so follow Raoult's law over the entire range of concentration over the range of concentration. Okay. Number 2. So what are the 6 points left? The theoretical vapor pressure must be equal to observed. Okay. So what is the behavior of ideal solution? We observed that the theoretical vapor pressure is equal to the observed vapor pressure. Okay. What is observed vapor pressure? Observed means we use barometer to check the pressure. Okay. And what is theoretical means which one we use to calculate. So here which formula we found out? So that formula will be used to calculate the theoretical pressure. Okay. Number 3, the total change in volume must be equal to 0. Okay, the total change in volume must be equal to 0, or we can say that change in volume of the solution is equal to 0. Okay, so how will explain this? For example, so here it is 5 ml solute, here it is 5 ml solvent. So after mixing it will be 10 ml. Okay? So change in volume equal to volume final minus volume initial. So here it is 10 minus 5 plus 5, 10. Done. So change in volume equal to second. This is the most important point, which is the very most important point. What will happen? So we know solute. Okay. So let this is a solute, this is a solvent, and solution will be formed. Okay. So for example, there are solute is represented by A, solvent is represented by B. So this is the solute, this is solvent. But in solution, what will happen? A will be there, B will be over there. Okay. So here between A molecule some force of attraction will be there, B molecule some force of attraction will be there, and after mixing them to form a solution, here also some force of attraction will be there. Okay. So what is the spectacular feature of ideal solution is that the force of attraction of A molecules, that means solute, and B molecules, that is solvent, it is equal to AB. Okay.
So the force of attraction between AA molecules, that is solute, and between BB molecules, that is solvent, that will be equal to the AB molecules, that is of the solution. So this is the most important feature. Okay, so the force of attraction will be same here, here and here. Okay, understood? Next, there are 2 points which are remaining. So I think let's rub this part. Okay, I think let's rub this part, or we'll complete here only. Okay, what do you say? Let's rub this. Okay, so remaining 2 points are there. Okay, so number 5, total change in enthalpy of the solution is 0. Okay, so what do you mean? Enthalpy means what? The bond energy which is involved in the molecules. So for example, here what? This is solute, this is solvent molecules, and that forms solute molecules, or what? Okay, see here. For example, so see how this AB will have been formed. A जो AB bonding टा केम देइथिबो. So solute particles भांगी थिबो, solvent particles भांगी थिबो, तापर जायकि तांको इधर बॉन्डिंग हेतिबो ना. ओके, सो ए जो भांगिया पे किसी एनर्जी दरकार हेटी ना, नहीं सेरा धर ΔH1 आ पे किसी दरकार ΔH2 हला. तापर एडी 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो कारण ये ए जो बी जो 2 तापर ए पॉइंट टा केमती ए पॉइंट संगे रिलेटेड अछि देखिबा. कारण एबे हम कोन पढले just now we have remembered that in the case of ideal solution. Okay, so here it is solute, here it is solvent, it gives solute solvent mix which is known as solution. Okay, so the force of attraction between solute molecules is equal to the force of attraction between solvent molecules is equal to the force of attraction between solvent molecules. That means the bond energy will be same here. Okay, so for example, here if it is 5 kilojoule, here if it is 5 kilojoule, so here also it will 5 kilojoule, but as there are 2, so it will become 2 into 5, that is 10 kilojoule, for example. Okay, so what will be the total heat content? That is heat of reactant minus product. So sorry, product minus reactant. So here it is 10 minus, here it is 5 plus 5 over. The change in volume of the solution is 0, the change in enthalpy of the solution is 0. Okay, again I am saying, as the force of attraction between these bonds are nearly similar for ideal solution, so the energy which is required to break these bonds are equal, and the energy which is released in the formation of this bond is also equal. Okay, so over, hence the total heat of the solution is equal to 0. Done. Then the last point is examples. Okay, so benzene, toluene. So what are the examples which are mentioned in NCERT? The solution of benzene with toluene. So just remember these examples, it will be asked in MCQ questions. So benzene and toluene, N-heptane and N-hexane, N-hexane and N-heptane. Number 3, ethan bromide. Chloroethane plus bromoethane. Okay, so these are the examples. Was this clear? Lohan, was this clear?
Okay, so this was our ideal solutions. Okay, so ଏବେ ଆମେ quickly revise କରିବା non ideal solution. Okay, so just take a screenshot. So out revision करदेगा. So ideal solution is that which follows Raoult's law over the entire range of constitution. It also follows its graph. Okay, so what was the graph of Raoult's law? So this was the graph. Okay, this was the total pressure. Here it was mole fraction. Here it was one component. Here it was second. Okay, first point. Second point, the theoretical pressure is equal to the observed pressure. Okay, so what is the difference between theoretical pressure and observed pressure? Observed pressure, which will be measured by an instrument known as barometer. Okay, but the theoretical pressure is that which will be calculated from Raoult's law. So that is Pt equal to Pa plus Pb, which you have already known. Number third point, the change in volume of the solution is zero. Fourth point, which is most important, that is the force of attraction between solid molecules and solvent molecules, and solid molecules will be all same. Okay. Number fifth point, the change in enthalpy of the solution is zero, as the same energy is required to break these bonds, and same energy is released while the formation of this bond. Okay, so the total change in enthalpy is zero. Then three examples of solutions which show ideal behavior, that is benzene and toluene, N-hexane and N-heptane, and chloroethane and bromoethane. Okay, done. So now we study about non-ideal solution. So this is a new thing. So non-ideal solution means what? Which do not follow Raoult's law. Okay, over any range they will not follow. Okay, so ideal solution are divided into two categories, that is the solutions which show positive deviation from Raoult's law. What do you mean in simple terms? Okay, so non-ideal solutions are categorized into two types. Okay, first is your solutions which show positive deviation from Raoult's law, and second, the solutions which show negative deviation from Raoult's law. Okay, so now we'll start with that non-ideal solutions. Okay, so now we'll start non-ideal solutions. Okay, so see here, non-ideal, clear? So non-ideal solutions are categorized into two types. One is positive deviation, from Raoult's law, and one is negative deviation from Raoult's law. Okay, so both these, they do not follow Raoult's law over any range of concentration. Okay, okay, so check out. So what we studied in ideal solution, it follows Raoult's law, it follows that graph also. Okay, but in the case of non-ideal solution, we have two categories, that is positive deviation from Raoult's law and negative deviation from Raoult's law. Okay, so what is the first important point that you are going to study? So remember, in the case of ideal solution, what we studied, that is the force of attraction between solid molecules, that is AABB, solid solvent is equal to solution. Alright, that is force of attraction between the molecules in this solution. Okay, so positive deviation means what? The pressure will be more here. Okay, so here the P observed will be greater than P theoretical, and in the case of negative deviation, so just compare this and remember, it will be easy for you. So here P observed is less than P theoretical. Okay, so basically what is the most important thing that you can learn from this? So positive deviation means the graph we have studied in ideal solution. So how was the graph looking like?
So the graph was looking like this. So graph एमती देखा होता ना नहीं, एटा थिला टोटल PA प्लस BB ना नहीं देखो. So positive deviation माने कौन? ये जो ग्राफ था थिला partial pressure एटी बढ़ी जाइए. So there is an increase in the partial pressure, and in the case of negative deviation, this point shifts downwards. तामने there is decrease in the partial vapor pressure. Okay. So first point is P observed is greater than P theoretical कारण एटी pressure ऊपर को जाऊँगी माने सेट बढ़ुची आ नेगेटिव डेविएशन ने कम होची. सो एटी आगे ग्राफ टा कर दबा. क्लियर. सो P observed is greater than P theoretical सेट ना पॉजिटिव कारण एटी प्रेशर बढ़ुची. सिंपल मन को यदि कंफ्यूज होचे जस्ट मन को एटी प्रेशर बढ़ुची ग्राफ टा ऊपर को जीवो. सो ईच ग्राफ रो ऊपर को जीवो. देखो केमति करबा हमें एटा ग्राफ अछि ना नहीं. हम ओरिजिनल ग्राफ टा कोन होतला एटा एमदी आस्तला एटा टिक लोअर रहउतला एटा टोटल प्रेशर होतला. ओके एबे कोन हबो देखो एटा धर ए कंपोनेंट में हैला एटा बी कंपोनेंट में हैला. सो आउटे मार्कर यूज करछि. सो एठी भी ए कंपोनेंट रो भी एडी प्रेशर बढ़ी छि, बी कंपोनेंट रे बढ़ी छि और टोटल प्रेशर भी बढ़ी छि. वेरी इजी. ओके एडी हम कोन देखथिले एडी मोल फ्रैक्शन हम कंपेयर करथिले. एडी 0 to 1 थिला, एडी x0 रो कॉन्स्टिट्यूशन 1 थिला, x0 0. सो x कथा जे कहबा m दे इंक्रीज करथिला x0 बट सी हियर से a कंपोनेंट बाय बढ़ी छि, b कंपोनेंट बढ़ी छि और टोटल प्रेशर बाय भी अप अछि. सो सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन कोन हबो डाउनवर्ड पीक हबो. ओके नेगेटिव माने एडी प्रेशर कमी छि. सो हाउ विल ड्रॉ द ग्राफ. सो सेम just we'll make one difference and you know that so see here what will happen here the vapor it will be downwards. Okay very easy. Easiest of this chapter is this part. Okay then coming on to third point. So ideal solution कौन थला the change in volume of the solution was 0. The change in enthalpy of the solution is 0. In this case, here it will be greater than 0 or it will have positive value. Here it will be less than 0 or negative value. Simply, very easy to remember. So here del V of the solution is greater than 0 or positive. And here del V of the solution is less than 0 or negative. Okay. Number 4th point, enthalpy. So change in enthalpy of the solution is also greater than 0 or positive. Very easy. Okay. And here it is change in enthalpy of the solution is less than 0 or negative. Done. Then number 5th point, what? See here, what was the most important point of ideal solution was that the force of attraction between the solid molecules was equal to the force of attraction in the solvent molecules was equal to the force of attraction in the solid molecules. Okay, but here what happened, see, if this was the original pressure, if this was the total pressure, okay, here it is positive deviation means what? Here the pressure has increased very rapidly more. Why? Because after mixing, okay, here the force of attraction between AB molecules, so here it is A molecules, it is B molecules. So why the pressure increased? Because when the solid solvent molecules mixed together, they had very less force of attraction for each other, or they hated each other. Okay, so if you hate your friends, you will be separated or what? Simple. So as there is no force of attraction or very less force of attraction between AB molecules, hence they easily found vapor, hence they had more partial vapor pressure. Very easy, done. And in this case it is opposite. What is the opposite here? The force of attraction between the solid and solvent molecules is what? Not the same as this. Here the force is less. So if it is less force means what? Less force of attraction means what? More energy will be required. So they will be, what will happen? So again I am writing this. So force of attraction between AB molecules, okay, is less than AA molecules
or BB molecules. Okay, so as there is less force of attraction, so they will easily form vapor, hence the partial vapor pressure increases, and hence the graph will look like this. So it is called as positive deviation. Okay, and here and here it will be what? Now here the force of attraction, okay, the force of attraction of what? AB molecules will be what? More than AA and BB. Okay, so देखो एट जदि AB मॉलिक्यूल भितर जदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक अछि ता माने कोन से वेपर प्रेशर कम फॉर्म करिवे, सो से मान को ग्राफ टाइम द डाउनवर्ड हिच कोन. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स. आ गोटे पॉइंट खाली एग्जांपल रहला सर लिखिबा. हला सो एग्जांपल आर होची इथेनॉल प्लस वाटर, एटा मन रखे आर HCl प्लस वाटर मन रखे. ओके, सो फाइनली एटा हमर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होइला. आउ थे रिवीजन कर दिया. सो आइडियल सॉल्यूशन कोन थला आउ थे पॉइंट करे हम रिवीजन करिया, तापर नॉन आइडियल. सो आर स्क्रीनशॉट करो. Okay, so we'll revise what you have studied. So ideal solution हमें कौन पढ़ते? फर्स्ट पॉइंट, इट फॉलोज राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. सेकंड पॉइंट कौन थिला? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल थिला, माने सॉलिड सॉलिड मॉलिक्यूल्स भितर, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भितर और सॉलिड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल थिला. ओके, तापर कौन सब पढ़ते? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू 0 थिला, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू 0 थिला. ओके, आ कौन पढ़ते? आउ द ग्राफटा पढ़ते, एटा थिले द ग्राफ, आउ द एग्जांपल देखथिलो. किंतु एई केस रे कोन हैला? सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दुईटा कैटेगरी हेगला. गोटे होची पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, आ गोटे होची नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जदि किछि मन पड़नी जस्ट एति मन रखो. सो पॉजिटिव डेविएशन माने कोन? जो आइडियल सॉल्यूशन जो ग्राफटा थिला से केस रे ईच रो कोन माने टोटल सॉल्यूशन आ इंडिविजुअल ये रो ऊपर को हबो ग्राफ, ताने एडी पार्शियल वेपर प्रेशर इंक्रीज होची आ नेगेटिव डेविएशन डिक्रीज होची. सेट बाय फर्स्ट पॉइंट होची ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल पार्शियल प्रेशर आ सेपटे कम. सो फर्स्ट पॉइंट एडा गला. सेकंड पॉइंट ग्राफ कर देलो. नंबर थर्ड पॉइंट रे कोन? एडी पॉजिटिव डेविएशन माने जो चेंज इन वॉल्यूम आ चेंज इन एंथैल्पी थिला सेटा पॉजिटिव वैल्यू हबो आ सेपटे देना नेगेटिव वैल्यू. वेरी इजी. देन लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, एडी प्रेशर बढ़िला कहीं, प्रेशर बढ़ला कहीं, ए प्रेशरटा कार कार हमें कंपेयर करछे, ए दिरा मॉलिक्यूल्स माने कंपेयर करछे, माने सॉलिड सॉल्वेंट मिसला पर सॉल्यूशन हमें कंपेयर करछो. ओके, सो जदी ताको ते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम अछि ए जो सॉल्यूशन मॉलिक्यूल भीतर, सो माने इजीली वेपर फॉर्म करिवे. सो किछ हिंड्रेंस ही नहीं. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एबी मॉलिक्यूल्स इज लेस देन दिस. ओके, आंको इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम अछि बोली एडी तांगर पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ी जाउछि. सो सेपट केस उल्टा हबो. सेडी काहे कि कमी गला, काहे कि ने एत में कमिला कारण सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स भितर बेसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि, सेत में से कम वेपर फॉर्म करिवे, सेत में तांगर पार्शियल वेपर प्रेशर कम हबो. सेत में एडी ग्राफटा डाउनवर्ड हिच. ओके, ओवर. सो पॉजिटिव डेविएशन के देखबो इथेनॉल एंड वाटर सॉल्यूशन टा, आ बाकी एनसीईआरटी देख दबो. नेगेटिव डेविएशन के देखबो HCl एंड वाटर. डन. So this was about ideal and non-ideal solution.
सो फ्रेंड्स बहुत टॉपिक आम कवर करदे एंड वीडियो टी लंबा हो गला मुझे पूरा टायर्ड हो जाए बट सेमती चलती सो आउ जा रहा से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ वांटो फैक्टर ओके सेरा मु सांग सांग मुझे ओवरऑली गोटे रिविजन दे दूची तापर आम ए वीडियो को एंड करिया कारण सब वीडियो आउ थे लेक्चर फॉर्म रे भी आसो एटा ओवरऑल सब जिनसर गोटे 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 समअप थिला सो मु खाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन अच्छी आ वांटो फैक्टर कौन अच्छी से विषय में डिस्कस करके लाइव स्ट्रीम को आम एंड करिया ओके So now we'll discuss about colligative properties. Okay. So colligative properties कौन which depend only on the amount of solute and not on the solvent. Okay. So the properties which depends on only the quantity of solute depends on only the amount of solute. Okay, so colligative properties are the properties which depends on only the amount of the solute added. Okay, so what are the colligative properties? First is RLVP, which I have already studied. Okay, what is RLVP? Relative lowering of vapor pressure जोटा कि टिके पूर्व आम देखिले व्हिच हैव जस्ट स्टडीड नाउ ओके सो टिके पूर्व आम देखिले कि कोन ना गोटे गोटे प्योर सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर मैक्सिमम हबो एंड इफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ओके सो द फार्मूला कोन थिला सो चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल वेपर इनिशियल द्वारा प्योर कंपोनेंट बाय पी नॉट होता सो दैट इज इक्वल टू एक्स बी कौन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट ओके डन so pressure is lowered okay so if pa is the final pressure so pa ru p naught a minus hoba divided by p naught a equal to xp okay and if you substitute this so that is moles of P divided by total moles that is moles of solute plus so this is our relative lowering of vapor pressure so we'll remember 2 points so for pure solvent vapor pressure is maximum okay and if any solute is added here added in the solvent vapor pressure decreases okay number second is elevation in boiling point okay elevation in boiling point okay so it is represented del TB which is directly proportional to molality okay so what does this mean for example so this is water okay so water boils at 100 degrees Celsius okay but if we mix some solute here or different substances in water its boiling point will increase obviously it will increase because different molecules will be added so there will be force of attraction between water and that solute so obviously there will be more boiling point or more temperature which is required to boil it or to convert it into vapor okay so that change is referred to as del TB that is elevation in boiling point okay if initial boiling point was TB0 if final boiling point is TB so elevation in boiling point means what increase so TB will be more because TB is final boiling point and TB naught is pure boiling point okay so del TB is equal to what so del TB is equal to final boiling point minus initial boiling point okay which will be proportional to what which will be proportional to this solute which is added so that is referred to as what proportional to molality okay so we
we measure the concentration of this solute or the quantity of the solute in terms of the factor molality. Okay, so if we remove this, it will become what? There will be a constant which is known as Kb into m. Okay, so this is the formula for elevation in boiling point. Done. Remember again, if it is only water, so the boiling point of water is what? 100 degrees Celsius. But if we add different substances or solute in it, obviously more temperature will be required to boil water, hence the boiling point increases. Hence, if Tb0 is the initial pure solvent boiling point and if Tb is the final boiling point, then del Tb will be equal to Tb minus Tb0, which will be proportional to molality. Why? Because the concentration of this solute is measured in terms of molality. Okay, so Tb minus Tb0 is equal to Kb into m, and this Kb is what? This is Boltzmann constant. Okay, so similarly, molar elevation constant. Okay, similarly, this is just related to depression in freezing point. Okay, so number 3 is depression in freezing point. Okay, clear? So here it is was depression in freezing point means what? See here. So if initially it was Tf naught. Okay. So first of all, what is freezing point? What is freezing point? The temperature in which the solid liquid remains at equilibrium is called freezing point. So solid converts into liquid and vice versa. At this equilibrium condition, it is called as freezing point. Okay. So if Tf naught is the initial freezing point and if Tf is the final freezing point. Okay. So depression in freezing point means this Tf naught will be greater than Tf. So Tf naught minus Tm is equal to del Tf, which will be proportional to m. So same as here. So what will happen here? Tf naught minus Tf equal to Kf into m. This is your molar depression constant. Okay, this was a molar elevation constant. This was a molar depression constant. Very easy or not? So if we add some solute, what will happen? The freezing point will decrease. Okay, done. So one last topic is there, that is osmotic pressure. Osmotic pressure. Okay, so take a screenshot of that. So the last thing is osmotic pressure. Okay, so the last colligative properties is osmotic pressure. Okay, which was there in our biology. Okay, for example, these are two solutions which are connected. Okay, here it is pure solvent. Okay, here it is pure solvent, here it is solution. Okay, clear? So see here, the flow of water molecules from more concentration to less concentration of water is known as osmosis. We all know, for example, this is staircase. If we throw some object, it will obviously come from high concentration to low concentration. Okay, so similarly, the flow of water molecules from high concentration of solvent or water to low concentration water or the solution is called osmotic pressure, and here it passes through semi-permeable membrane. Okay, so what is semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane is a membrane which allows only the flow of solvent molecules and restricts the flow of solid molecules. Okay, so that is the definition of osmosis. Okay, osmosis. But what is OP? What is osmotic pressure? Osmotic pressure means what? To go against the process of osmosis, the pressure which is required is known as osmotic pressure. Means what? The pressure which is required to reverse the direction of osmosis is known as osmotic pressure. Okay, and what is reverse osmosis? So what is osmosis? The flow of solvent molecules from pure solvent to solution side. What is osmotic pressure? The pressure which is required to stop the flow of the solvent molecules from here to there. But what is reverse osmosis? Means we apply so much pressure that
from the solution side to solvent all the molecules will flow. That is known as reverse osmosis. Easy. Okay. Okay. So finally we'll see the formula and end this. So the formula of osmotic pressure is pi. It's equal to CRT. Okay. So what is C here? C refers to concentration, which will be referred to as molarity. So pi is equal to number of moles per unit volume in liter into R into T. Okay. So this is the formula of osmotic pressure. Very easy. So this is the end to colligative properties. Okay. So friends, finally we have ended colligative properties. We studied relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Okay. So finally we have come to the end of this, and just one more topic left, that is Van't Hoff factor or abnormal molar masses. So finally we are so this one we did not see in detail, but we have covered most of the important points related to colligative properties. Okay. So finally हमें लास्ट टॉपिक देखो छे. सो दोस्तों हम इस लेक्चर को के अंत के तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़े हिंदी हो जाए. तो दोस्तों हमने सारे टॉपिक्स ही कवर कर लिए हैं इस लाइव स्ट्रीम पे. ठीक है. लास्ट टॉपिक बाकी है अब, वो है abnormal मोलर मास या Van't Hoff फैक्टर. ठीक है. तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. ठीक है. ये हमारा लास्ट टॉपिक है. मैं सोचा नहीं था कि मैं लाइव कर पाऊंगा, पर बहुत ही कष्ट से हो गया, इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. ठीक है. तो ठीक है, फाइनली हम शुरू करते हैं. हमारा लास्ट टॉपिक वो है abnormal मोलर मास. ठीक है. abnormal मोलर masses. ओके. एंड Van't Hoff फैक्टर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को ये बहुत दिक्कत देता है, पर ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है. ठीक है. हम उसको देखेंगे कि abnormal मोलर मास और Van't Hoff फैक्टर क्या है. ठीक है. अभी हम पढ़ के आए हैं. हमने क्या पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, या नहीं. तो अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर निर्भर करता है? सिर्फ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर निर्भर करता है. ठीक है. अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट में कुछ ना कुछ चेंजेस आए या कुछ ना कुछ परिवर्तन आए तो क्या होगा? हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. हिंदी अच्छा लग रहा है ना. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो क्या होगा? ये पानी है. ठीक है. ये ग्लूकोज है. ठीक है. ग्लूकोज तो ये तो नॉन पोलर है. ठीक है. वो तो पानी में जाके वो टुकड़े टुकड़े नहीं होगा. ठीक है. तो इसका एक ही मॉलिक्यूल हमने फेंका था और अंदर भी एक ही मॉलिक्यूल हुआ. ठीक है. तो कुछ दिक्कत नहीं है. पर अगर हम कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl को अगर हम पानी में डालें, अगर हम नमक को, ठीक है, अगर हम पानी में डालें, ठीक है, हम जानते क्या है कि वाटर भी पोलर है, पानी भी पोलर है और हमारा NaCl भी पोलर है. ठीक है. अब क्या होगा? NaCl जब पानी में जाएगा वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा. ठीक है.
अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें कि यहाँ पर हमने 1 मोल लिया था, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 मोल ऑफ NaCl को हम लेंगे, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 मोल Na प्लस और Cl माइनस मिलके सॉल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने अभी इस रिलेशन में क्या पढ़ा, अगर क्वांटिटी ऑफ सॉलिड में कुछ ना कुछ चेंजेस आए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या सोचा था कि 1 मोल NaCl ही जाके पानी में डिजोल्व हो रहा है, बट वो पानी में जाके वो तो टुकड़े टुकड़े हो रहा है। इस टुकड़े टुकड़े को क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कहते हैं, ठीक है, डिसोसिएशन इनटू आयंस, ठीक है। So what will happen? This NaCl, when it goes into water or when it get dissolved in water, okay, it splits up into 2 ions. So that is 2 mole of Na plus and Cl minus. So here what happened? Here the quantity of solute changed. So the colligative property will also show some variation. Hence our observed colligative property will be different. Okay. So what to do? Nothing. For that only this factor is considered, that is Van't factor, which is denoted by small I. If we add this factor to the colligative property, we can know the new colligative property or the new changes which occurred. Okay, clear? For example, so the observed colligative property divided by theoretical colligative property. Okay. So what did we observe here? There are 2 mole of ions, but what we calculated for 1 mole. So Van't factor will be 1. Okay. Clear? So remember, in the case of dissociation, the Van't factor will always be greater than 1, which you have seen here. Okay. So what is this concept then? See here, for example, this was 1 mole. Okay. And now it broken into different ions, means what, the molecular mass decreases. So that's it. By changing the quantity of solute, the molecular mass here decreases because it splits up into 2 different ions. Okay. So that's why now the molar mass which is shown here is what, is decreasing instead of what, instead of the normal range. So that abnormal behavior in the molar mass is called the abnormal molar mass. Why it happened? It happened due to dissociation of the ions, ठीक है। और डिसोसिएशन के केस में Van't फैक्टर हर वक्त ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास हमारा डिक्रीज हुआ, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमारा डिक्रीज हुआ, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये तो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम और एक रिलेशन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज थियोरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब क्या, ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिक्रीज हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अगर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसका उल्टा रिलेशन ही होगा, ठीक है। ओके, और एक चीज हमारा बाकी है, वो है एसोसिएशन के बारे में, ठीक है। सो यहां पर हमने क्या देखा, सो व्हाट डिड वी स्टडी हियर, सो व्हाट इज abnormal molar mass? If we have some changes in the quantity of solute, okay, there is some changes expected in the colligative property, okay. So what happened, for example, this is glucose molecule, so glucose is non-polar. If it goes in water, the same one molecule goes, the property is observed for only one molecule. But see, in the case of NaCl, when NaCl is dissolved in water, what happened? If NaCl is dissolved in water, it splits up into Na plus and Cl minus, okay. If before we considered that for 1 mole of NaCl, but now what happened here? Here two type of ions are formed. So here 2 mole of Na plus and Cl minus are formed. So what did we calculated for 1 mole, but what we got 2 mole, okay. So that factor is called Van't factor, that is observed colligative property by theoretical colligative property. Observed colligative property means this. Here it will be 2. By theoretical we calculate for 1 mole, it will be 1. So 2 by 1 it will be 2. So in the case of dissociation, the Van't factor will always be greater than 1. Okay. So what happened here? This molecule is broken into ions. That means the molecular mass decreases. So in the case of dissociation, the molecular mass decreases. So this change in the molecular mass is
is known as abnormal molar mass due to dissociation of the ions. Done. So last topic that is association. Okay, association, for example, in the case of association it will be different, that is I will be less than 1. So in the case of dissociation means what? One molecule it broken into ions. In the case of association will what? If you take two molecules, okay, it will be joined. Okay, if you take two molecules it will be joined to form a dimer. Okay, it will form the molecule will associate to form a dimer. Okay, so for example here if the observed means what? It will 1 here. So before it was two molecules. So for theoretical we calculated for two molecules, but here what happened? The two molecules joined to form a dimer. So now it is 1. So 1 by 2, that is 0.5. So for association the I value is always less than 1. Okay. For example, if you take two molecules of acetic acid, okay, if you take two molecules of acetic acid, it is dimerized. Okay, it will dimerize to form a single molecule. Okay, for example here if we two molecule, here it will dimerize to form a single molecule. Hence the Van't factor will be 1 by 2, that is 0.5, and here the molecular mass will increase. Okay, because here it has two separate, but here it is joined, just the reverse case of that dissociation. So here what happened? The molecular mass decreases, here the molecular mass increases. So this change in the molecular mass is referred to as the abnormal molar mass. Okay, done. So finally this topic is clear. And so this Van't factor helps us to modify the colligative property. How? See here. So आमे जो colligative property देखिले, आमे चारटा colligative property देखिले ना नहीं. So what are the four colligative properties? Relative lowering in vapor pressure. Okay. Second, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. Okay. Fourth, osmotic pressure. Okay, done. So what was the formula here for relative lowering of vapor pressure? That is del P by P naught A, that is equal to XB. Okay. What was elevation in boiling point? That is del TB, that is equal to TB minus TB naught, is equal to M. Okay. What is depression in freezing point? That is TF minus TF naught. Okay, equal to M. And what is osmotic pressure? Pi equal to CR. Okay. Just do one thing, whenever in the case of association or dissociation of molecule, just multiply this Van't factor. So calculate I and just multiply here. Okay, here it is I into this, here also I into this, here also I into pi. Okay, just multiply I and just continue your answer. Okay, so this was about abnormal molar mass and Van't factor. So finally anyhow we came to the end of the solution lecture. Okay, is there anything left? Yes, there is one thing left, that is the relation between degree of association or dissociation with Van't factor I. Okay, so finally this was the last topic. Remember friends, the only limit is your mind. Okay, if you feel you are weak, you will always feel weak, and if you feel you are strong, you will feel strong, and you will get more energy to perform more stronger. Okay, so finally, so this is the last point that you are going to discuss. So for dissociation, I minus 1 so two formulas left. I equal to 1 minus alpha plus n alpha. I equal to 1 minus alpha plus n alpha. I equal to 1 minus alpha plus n upon alpha.
Okay, sorry, alpha by n. Alpha equal to degree of dissociation or association. Okay, so this is the last part, that is relation between Van 't factor I and degree of dissociation or association alpha. Okay, so degree of dissociation means what? How many dissociated? That's the degree of dissociation. Okay, for example, out of 100%, only 50% of the molecule dissociated. So 50% what? 0.5, that is your alpha, that is degree of dissociation. Okay, so just remember this formula. In the case of dissociation, it will be I equal to 1 minus alpha plus n alpha, and for association it will be 1 minus alpha plus alpha by n. Okay, done. So friends, finally we have come to the end of the solution lecture, and I once said, and आउ थे मुझे जस्ट टॉपिक गुरा जस्ट मुझे सम अप कर देबी कौन कौन हमें कवर कले. ओके, so these are the topics that we studied. Okay, introduction and types of solutions. Okay, we covered them. Number 2 we covered concentration of solutions. Okay, done. Number 3 we covered solubility. Okay, we covered. Okay, so solubility, we checked solid in liquid and gas in liquid, and we studied about which law? Henry's law, that is P equal to KH into X. Okay, number 4 we studied about vapor pressure. Okay, about vapor pressure of liquid solutions, and we discussed about the formula and the graph, and also in the case of RLVP, that is when you add a non-volatile solid, the vapor pressure will decrease. Okay, number 5 we read about ideal and non-ideal solution, ideal and non-ideal solution. Okay, ideal solution which follows Raoult's law, and in the case of non-ideal we studied about 2, that is positive deviation from Raoult's law and negative deviation from Raoult's law. Number 6 we studied about colligative properties. Okay, so colligative properties, that is relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Okay, cleared. Then last topic we studied about abnormal molar mass and I, that is Van 't factor. Done. Clear. So finally this was it, and let's end this. Now the time is 10:42. So finally we end this, and thank you for those who watched. Thank you. And I just wanted to share something before I end this. Actually it has been 14 days since I uploaded any video. Okay, and I could not gather that confidence again, but I'm thankful to God that anyhow I did today. Okay, and only when you face your fears, only when you face your insecurities, only then you will improve. Okay, only then you will improve. And everything lies in our mind. Okay, if you are weak in our mind, then we are weak, but if you feel strong in our mind, then we are strong. Okay, so what you think, you will become. Okay, and what to share, and this was just the beginning. So this was the foundation. So from here we are going to plan a lot of things. Okay, and we are going to make a good strategy also, and whatever things we are going to do ahead. Okay, so that's it. And finally thank you for those who watched, and do like, subscribe and share, and it's enough for today. So thank you, namaskar, and God bless you, all the best.
Is anyone there now? No, no one. Okay, so finally we're ending. It was a good experience, even though it was not 100%, but it was nice. Okay, so just one thing, this video should not be deleted because last time I did a live, it was deleted, so I'm checking out. Cancel. Where is done? I think it's done. I think it's done.